So in today's lecture, which is the introductory lecture of drafting and pleading, we'll be discussing these topics today, some basic terminology of legal language and litigation that is used in the drafts and pleading, etc. We'll be discussing very basic definition of what is pleading, what is conveyancing, stages of a case. So this is what we'll learn about today. So drafting is an exercise of writing legal case and presenting the case before the court. Drafting also includes other things such as drafting of other documents such as sale deeds, lease deeds, agreements, contract, etc. So drafting can be divided into two parts, pleading and conveyancing. इन दोनों को क्या डिफरेंस होते हैं, क्या मीनिंग होते हैं, दैट विल लर्न इन टुडेज क्लास. उससे पहले आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड इन लीगल लैंग्वेजेस इन कोर्ट. एंड इवन आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता होता. इवन अ लॉट ऑफ लॉयर्स हु आर एक्सपीरियंस, उनको भी इन छोटे छोटे टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन होती है. एंड इन ड्राफ्टिंग व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर केस which is like presenting your own handwritten book before the court, so ये छोटी छोटी mistakes, ये छोटे छोटे terminology makes a lot of difference because judge always know how much you know, how much of in-depth knowledge of law you have. So there are some basic terminology which I want you to write also and learn very well so that there is no confusion and you do not make mistakes with these terminology. If you're in law college, if you're a student, then you'll come across terms in your books, but at least in my law college, ये सारे terms बहुत अच्छे से define करके नहीं बताए जाते हैं. And if that is the case in your college also, it's very important that you understand very basic things of these, so that you do not make these mistakes in court of calling the wrong names. So first is plaintiff. Plaintiff, you can learn it from the word complaint. जैसे complaint से plaint आया है. So plaintiff is a person who files a complaint before the case, before the court, who files a case before the court. Now, most important thing to learn about plaintiff and to remember about plaintiff is that it is only used in civil cases. So plaintiff is not the word that you will see in criminal. So you should never use the word plaintiff when you are making a criminal draft, when you're preparing a criminal case. Opposite of plaintiff is defendant. जिसने केस फाइल किया वो प्लेंटिफ है, जिसने कंप्लेंट फाइल करी वो प्लेंटिफ है. नाउ द अदर पर्सन जो डिफेंस करेगा, जो अपने आप को डिफेंड करेंगे कोर्ट में, दैट इज कॉल्ड डिफेंडेंट. So person against whom a case is filed and who defends the case in court is called defendant. It's very simple, the terminology defend. The one who defends is defendant. Plaintiff and defendant are opposite to each other, meaning both of them are used in civil cases. Both of these terms you will never ever see in criminal law, and if you're seeing it, the other person is also making a mistake. So ये जो common mistake है जो lawyers कुछ कर देते हैं, but you always remember whenever you're making a civil case, whenever you're preparing a civil case, the word that you will use is plaintiff and defendant. Now complainant. Complainant is a term that is used in criminal law. So a person who's filing a complaint, let's say this is a complaint of theft, जो कि criminal offense है, so that person will be called complainant. The opposite of complainant is accused. So a person against whom crime is alleged and defends the case in court, that is the accused person. So complainant is the one who files a criminal case and accused is the one who defends, जिसके against case file किया हो. So for example, if a case of theft has been filed, then against whom, जिसको आप बोल रहे हो कि इसने चोरी की है, that person will be called accused. And complainant and accused are both of the terms that should not be used in criminal law, that should not be used in civil law. These are very specific of in criminal drafting. So इसमें confusion नहीं होना चाहिए that the plaintiff is being used in criminal law, that is wrong, or the accused word is used in civil, that is also very wrong. Now prosecution is a person who alleges a crime. So prosecution can be a person also. If I am saying this person has committed a crime, or if I have filed a case of theft in before a police station and before a court, then I will be the prosecution. And
apart from a private person, most important team जो prosecution that makes up is the police. Police also comes in the team of prosecution. Public prosecutors, if you have heard of, they also on the side of prosecution. And sometimes government bodies can also be on the side of prosecution, such as CBI, EPFO, ED. So ये सारी organization prosecutions की side होती हैं, क्योंकि criminal में it's not a wrong against one person but against a society. So whenever there is a wrong against a society, meaning a criminal act, an offense, so prosecution always comes up. In these cases, it's also important to understand that prosecution जब भी आते हैं in the picture, so it's the government who provides lawyers and prosecutors, and they also fight the case. So एक तरीके से देखा जाए, complainant and prosecution same ही होते हैं, but complainant is used specifically for the person. If I am going to the police station and filing a case, I'll be the complainant. Prosecution की side से public prosecutor, वो भी prosecution होंगे, पुलिस भी prosecution होगी, जो evidence इकट्ठा करेंगे कोर्ट में to say that this person committed the theft. And अगर theft बड़े level का है, let's say CBI involve हो गई, so CBI will also be a government body that will be called prosecution. So prosecution is the one who is trying to prove a case against any other person in the court of law. Accused opposite हो गए, so prosecution का opposite भी accused ही होता है. So a person against whom crime is alleged and defends the case in court, it's the accused. Appellant is a person who appeals. So let's say आपने केस फाइल किया है सेशंस कोर्ट में, केस फाइल हुआ है सेशंस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट का कोई डिसीजन आया कि नहीं, वी फाइंड दिस पर्सन नॉट गिल्टी एंड द पर्सन इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, तो वो अपील में जा सकते हैं. That person will be called appellant. Now the most important thing to remember here is that appellant can be any person. So जो मैंने भी example दिया कि one person has filed a case, मैंने कंप्लेन करी चोरी की कि मेरे घर में चोरी हुई है, सो मैं कंप्लेनेंट तो हुई, केस चला पूरा कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, डिसीजन आया कि ये जो चोरी है हम पकड़ नहीं पाए, या फिर दिस पर्सन जिसके अगेंस्ट चोरी मैंने अलेज की थी वो उसके अगेंस्ट एविडेंस काफी नहीं है, सो वो पर्सन अक्विट हो गए. So I am not happy with the decision of sessions court, so what will I do is I will go in appeal to higher court. कैसे कैसे अपील जाती है, that is a matter of other time, but जो भी अपील फाइल करेंगे आगे कोर्ट में in the high court or let's say in supreme court, that will be called appellant. So अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आ सकती है, तभी भी अपील अपीलांट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, तभी भी अपीलांट होगा, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब भी अपीलांट होगा, और अपील कोई भी जा सकता है, मैं भी जा सकती हूँ. और लेट्स से कोर्ट का डिसीजन आया कि this person is guilty of committing the offense of theft, and now that person is saying I have not done this, I am not happy with the decision, so that person can also go, meaning accused can also go in appeal, and in that case appellant, वो appellant हो जाएंगे और prosecution हो जाएगा opposite side उसका. Appellant का opposite होगा respondent. So जैसे मैंने अभी आपको एक situation बताई, उसमें क्या होगा, appellant, the accused person went in appeal, so वो appellant हो गए, और respondent हो जाएगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, स्टेट जिसको बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज एक्सेट्रा. डिक्री इज अगेन अ टर्म ऑफ सिविल कोड. सो लेट्स से एक केस फाइल हुआ है, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है कि ये प्रॉपर्टी ए है या बी की प्रॉपर्टी है, ए और बी के आपस में बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, केस फाइल किया ए ने बी के अगेंस्ट कि बी मेरी प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती रह रहा है, दिस इज माय प्रॉपर्टी. सो कोर्ट विल डिसाइड द केस एंड कोर्ट विल गिव अ डिसीजन. सो जो फाइनल डिसीजन होगा कि ये प्रॉपर्टी इफ इट बिलोंग्स टू ए और इट बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड डिक्री, जिसको जब बहुत डिटेल कर देते हैं तो उसके बाद में जजमेंट भी बोल देते हैं. लेकिन डिक्री और जजमेंट में डिफरेंस ये है कि डिक्री इज ओनली स्पेसिफिक टू डिसाइडिंग कि ए की प्रॉपर्टी है बी की प्रॉपर्टी है. जजमेंट में बहुत डिटेल रीजनिंग अभी आएगी कि ए की प्रॉपर्टी क्यों है और बी की प्रॉपर्टी क्यों नहीं है. सो डिक्री विल बी द फाइनल ऑर्डर ऑफ डिसाइडिंग इन whose favor or against whom the relief is given. So that is decree, and decree again is a word of civil court only. It is not used in criminal courts.
Interim order. Interim order is the order that is passed during the pendency of a case. So let's say, same example, A has filed a case against B saying that B is living forcefully in my property and it's trespassing in my property. Ma'am, your sound is not proper. Hello, can you hear me better now? We can hear you, but your sound. I can't hear you now. Let me check. क्या हुआ? Sound is not proper. हाँ नहीं. ठीक है. ओके ठीक है मैंने देखा. Hello. Is anyone else also facing the issue of voice? Is my voice? Now you are audible, madam. Okay. I'll go back to that screen to see if अभी भी ठीक आ रही है आवाज? हाँ आ रही है. ठीक है. And also I'll go a little slow because some of you have mentioned in the chat box. But अभी मैं सबसे questions पूछूंगी. I'll go through this again. So you can ask me questions if you have any doubts. Okay. So interim order is an order that is passed during the pendency of a case. Meaning, if A has filed a case against B saying B is living on my property forcefully and this is my property. So what will happen is case court mein gaya and now B is saying that I am living here by giving rent. So and I should not be thrown out of the property जब तक ये केस चल रहा है. तो लेट्स से बी को एक इंटरिम ऑर्डर मिल गया, बीच में कोर्ट से ऑर्डर मिल गया कि जब तक ये केस चलेगा, जब तक डिसाइड नहीं हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी ए की है या बी की है, तब तक बी विल बी should not be thrown out of this house or of this property. That will be interim order. Interim order मतलब it's called बीच का order during the pendency of a case जो दिया गया हो. Now decree holder, जिसके फेवर में डिक्री पास की गई हो या फिर जिसके फेवर में ऑर्डर पास किया हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड डिक्री होल्डर. जजमेंट डेटर, लाइक द टर्म सेज डेट, जिसके अगेंस्ट डिसीजन आया हो. लेट्स सेम एग्जांपल, ए और बी का केस चल रहा है. ए हैज सेड दैट बी इज लिविंग ऑन माय प्रॉपर्टी फोर्सफुली, और एट द एंड ऑफ द केस यही डिसाइड हुआ दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए. सो ए विल बी द डिक्री होल्डर एंड कोर्ट विल आस्क बी टू leave the property or to get out of the property. So in that case judgment debtor हो जाएगा B, जिसके against decision आया हो. Okay. Prosecution evidence, defense evidence. ये क्वेश्चन मैं पहले पूछना चाहूंगी क्योंकि अभी मैंने प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों चीजें समझाए हैं. सो इज देयर एनीवन हु कैन just raise their hand and tell me prosecution evidence और defense evidence लिखा हुआ भी है, समझ में आया और एग्जांपल्स के साथ. Yeah, Ayushri Mehta. Yes, ma'am. So, prosecution evidence is something where, let's say, we have a case where we are taking the trial of the murder, and therein the prosecutrix has a particular evidence to showcase that, for example, the night where there are fingerprints of the accused to showcase that the person has committed the crime. So this is the prosecution evidence, while the defense evidence would be that they deny the person to be present on that very place to have in possession of any kind of such evidence, or they fail to match. They show a report where they can prove that the fingerprints on the knife were not that of the accused. So that is the defense evidence. Okay, great, perfect. Prosecution evidence will be the evidence to prove the guilt of a person. जो आएंगे
कंप्लेनेंट की साइड से, प्रोसिक्यूशन की साइड से, पुलिस की साइड से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की साइड से. दैट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी फिंगरप्रिंट्स, it could be documents, it could be tickets to show that that person was present there at the time of crime. So prosecution evidence. Defense evidence is the evidence that the defendant or the person who's defending the case will show. So prosecution evidence or defense evidence. Prosecution evidence is again a term very specific of criminal. Defense evidence can be used in both civil and criminal. Now, appellant and respondent again is the same. Okay. Suit or plaint. Suit is the overall case that is filed and before a civil court. Plaint ho jayega, jo, again it's come from the word complaint. Complaint ka short, plaint, and the case that is filed by plaintiff claiming reliefs or benefits, anything that is a plaint. Suit will include plaint, it will include the written statement, and it will include all the evidence of a case all together. ये इसको सूट कहते हैं. कंप्लेन केस कहेंगे क्रिमिनल केस को. पिटिशन कहेंगे कोई भी केस फाइल. Now petition can be of different types and that will learn in the during this course. Divorce petition भी हो सकती है, special leave petition भी हो सकती है, writ petition भी हो सकती है. So petition is a word that is commonly used in widely in the field of law, and it is not very specific to one as compared to other words such as prosecution, suit, plaint. Okay. And service and defects. सर्विस और डिफेक्ट्स एक बहुत छोटा टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, स्पेशली ड्राफ्टिंग वाले लोगों के लिए डिफेक्ट्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेक्ट्स आर द एरर्स एंड डिस्क्रिपेंसीज दैट आर इन योर ड्राफ्ट. तो डिफेक्ट्स बहुत छोटे छोटे कुछ भी डिफेक्ट लग सकते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट द लेवल ऑफ डिफेक्ट्स इज वेरी हाई. दैट मींस यू हैव टू submit a very proper and perfect draft before the court. उसमें ना ही पेज नंबरिंग की मिस्टेक्स हो सकती है, उसमें ना आपके एनेक्सर्स, आपने जो पेपर्स फाइल करे हैं वो ब्लरी हो सकते हैं, उनकी फोटोकॉपी भी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए. फॉन्ट आपको एक तरीके का यूज करना पड़ेगा, लाइन स्पेसिंग आपको ये यूज करनी पड़ेगी. एंड जब आपका एकदम ड्राफ्ट परफेक्ट दिखेगा तब जाके वो पास होता है और तब जाके वो केस में कोर्ट में लगता है. तो डिफेक्ट्स जो भी आपकी फाइल में, जो भी आपके केस में इश्यूज होंगे, एरर्स होंगे, डिस्क्रिपेंसीज होंगे, दैट विल बी कॉल्ड डिफेक्ट्स. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ड्राफ्टिंग, व्हाइल ड्राफ्टिंग एंड एज अ ड्राफ्टर, कि आपके डिफेक्ट्स कम से कम हो, अदरवाइज द केस विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीच कोर्ट, which it should not happen. So defects is very important thing to take care of while drafting. सर्विस किसको कहते हैं? सर्विस कहते हैं जब हम अपना केस फाइल कर लेते हैं, सो दूसरी साइड को जब कॉपी प्रोवाइड करनी होती है, देन इट इज कॉल्ड सर्विस. सो मैं कोई केस फाइल करने जा रही हूँ, लेट्स से मैं अपनी पिटिशन कोई फाइल करने जा रही हूँ केस कोर्ट में, सो आई हैव टू गिव दी कॉपी ऑफ इट टू दी ऑपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट मैं केस फाइल कर रही हूँ. So that and that process of providing the copy to the other party is called service, and that is necessary in all cases. Criminal cases में service court करवाती है, civil cases में पहले होती है, और जो केस फाइल कर रहे हैं तो उनको खुद करनी होती है. Now with the digitalization, email service भी allowed है, soft copy की service भी allowed है, which has saved a lot of money in and also saved a lot of paper. So it's a good thing, but in all the cases, service to the opposite party is important so that they can know what is the case that is being filed against them, and they can prepare the case, prepare the defense against them. Now, before I move ahead, you can all go through it one more time and ask me any questions if you have so far. There's a small exercise after it, which anyone, those who raise hand, will have to do. So if you want to make notes of it, you can also make. I'll give just 1 minute so everyone can take notes or anything.
Okay, Khaja Mohiuddin. Yes, madam. Yes, you have a question? Madam, I want to know what is the complainant difference between complainant and prosecution, madam. This complainant also you put criminal and prosecution also belongs to criminal cases only, no? Yes, yes. What is the difference? Complainant is the word used who files the case. So I'll give you with the help of example. जो मैंने अभी यूज भी किया था, जैसे रॉबरी हुई है मेरे घर में, सो मैं जाऊंगी, आई गो टू द पुलिस स्टेशन, मैं केस फाइल करूंगी, सो मैं कंप्लेनेंट हो गई, ठीक है, आई एम द कंप्लेनेंट, आई एम गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, आई एम फाइलिंग अ केस. जब ये केस कोर्ट में जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट में, सो मैं अपना केस नहीं लड़ूंगी. केस लड़ने के लिए जो लोग आएंगे कोर्ट में, वो जनरली ऑल टुगेदर प्रोसिक्यूशन कहलाते हैं. तो वो लोग कौन होंगे? पुलिस आएगी एविडेंस देने के लिए, वो भी प्रोसिक्यूशन के साइड से हो गए. पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे, मतलब आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ क्राइम हुआ है, सो आपको वकील भी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से, तो वो प्रोसिक्यूशन हो गए, ठीक है. अब कभी कभी क्रिमिनल केस, जैसे सीबीआई भी केस कर देती है जब बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड होता है, सो इन दैट केस सीबीआई कैन आल्सो बी द कंप्लेनेंट, क्योंकि सीबीआई को पता चल पाया. सो द पर्सन हु इज फर्स्ट पर्सन टू फाइल अ कंप्लेंट is the complainant. So you mean to say this complainant public prosecutor will deal the case, right? Yes. Even for robbery or theft cases, something like that? Yes. Public prosecutor will deal with it. Public prosecutor will be on the side of जिसके against, on the side of victim, to say. उनकी तरफ से okay. करेंगे. And thank you. Also one more thing, if you this also helps कि अगर आप क्रिमिनल केस का टाइटल देखेंगे, ये जो टाइटल वगैरह बातें हम लोग इसमें इस लेक्चर में भी आएंगे. आज मैं बहुत ही बेसिक चीजें डील करना चाहती थी. सो कंप्लेंट क्रिमिनल केस का टाइटल होता है, जैसे इफ द क्राइम हैज हैपेंड इन यूपी, सो इट विल बी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एबीसी, द पर्सन अक्यूज्ड का नेम. अगर महाराष्ट्र में क्राइम होगा तो इट विल बी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एबीसी, जिसके अगेंस्ट मर्डर केस फाइल हुआ है. सो ये जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ यूपी है, ये प्रोसिक्यूशन होगा. कभी कभी केस का नाम देख के काफी कुछ पता चल जाता है. सो दैट स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सीबीआई फॉर दैट मैटर, वो प्रोसिक्यूशन कहलाएंगे. एंड सिविल केसेस का जो टाइटल होता है वो होता है एबीसी वर्सेस एक्सवाईजी. अगर कंपनी में आपस में दो लोगों का डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा, तो वो होगा एबीसी वर्सेस एक्सवाईजी. सिमरन गिल वर्सेस खाजा मोहिउद्दीन, आपस में हम लोग का कोई कॉन्ट्रैक्ट का इशू है. सो नाम से भी पता चल जाता है कभी बहुत बारी कि ये क्रिमिनल केस है और ये सिविल केस है, और कौन इसमें कंप्लेनेंट है, कौन प्रोसिक्यूशन है, कौन प्लेंटिफ है, कौन डिफेंडेंट है. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चंस? Ma'am, could you tell the difference between complainant, accused, and appellant, respondent? Okay. Complainant and accused. No, the difference between complainant, accused as one, and appellant and respondent. The difference between the set of these. Okay. So complainant and accused, you understood? Complainant will be the one to file a case, and accused will be the one against whom case is filed. Clear so far? Yes, ma'am. So appellant and respondent, I'll explain this with the help of example. Same, I'll continue. Robbery हुई है मेरे घर में. I am the complainant. I know कि मेरे पड़ोसी ने रॉबरी करी है, साथ में कुछ लोगों को लेकर आया था, मैंने कैमरे में देखा, तो वो अक्यूज्ड होगा. मैंने अपनी कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि I saw these person coming into my house and taking this items away, this much of cash away. So I'll be the complainant. My पड़ोसी, my neighbor would be the accused. Now case चला है और the court has come to the decision that my neighbors are not guilty. So I'm not happy with the decision. So I'll appeal the case. मैं इसकी अपील करूंगी कहीं, जिसको बोलते हैं. So मैं अपीलांट हो जाऊंगी, मैं दूसरी कोर्ट में जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि नहीं, this was not taken care of
जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज मैंने सबमिट करी थी वो देखी नहीं पुलिस वालों ने, या पुलिस वालों ने डिलीट कर दी, तो मैं गई अपील में. सो आई विल बी कॉल्ड अपीलांट अगेन. अब रिस्पोंडेंट वो उनको भी आना पड़ेगा, तो वो रिस्पोंडेंट हो जाएंगे. सेम में बस पार्टी ऑपोजिट हो जाएगी इसमें. Okay, thank you. एंड द अदर वे इज अगर डिसीजन आ गया है कोर्ट का कि the neighbors have committed the crime और उनको 10 साल की सजा हो गई है and neighbors are not happy with the decision, तो वो जाएंगे अपर कोर्ट में. वो कहेंगे कि मैंने नहीं किया, या फिर वो कहेंगे पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, कम करो. so they can also appeal before higher court. तो वो अपीलांट हो जाएंगे और फिर हम रिस्पोंडेंट हो जाएंगे. मतलब प्रोसिक्यूशन साइड रिस्पोंडेंट हो जाएगी, because then we'll have to fight more. Okay. Any other questions? मैं नेक्स्ट वाले पे भी चली जाती हूँ. प्रीति जैन. Yes, ma'am. Ma'am, as you mentioned that if a person, like in criminal cases, if a person files a complaint for the first time, so he will be known as complainant. And if he appeals, so he'll be known as appellant. So, like, do we have the same case in civil thing also? Yeah. Appellant and respondent is a word that is used both in criminal and civil law. So plaintiff जब पहली बार केस फाइल करेंगे तो वो plaintiff होंगे, जब वो उसके अपील में जाएंगे तो appellant हो जाएंगे. Okay, thank you. On this slide, if anyone has any questions. So, ma'am, in prosecution, when a case is filed, suppose like it is against state of UP, for example, so the attorney general or like the solicitor general, like these people, they fight the case. Yes. In only in Supreme Court, they come and fight the case. ASG and the posts that you're talking about, they generally are the prosecution that fights in higher courts. So वो भी prosecution के side के ही हैं. The posts that you have taken, ASG and Solicitor General, they also fight on behalf of state only, but only in higher courts. Okay. And what's the difference between decree and judgment and order? Three terms. Okay. Decree मैं एक एक करके बताती हूँ. Order सबसे पहले आएगा. You can remember it like this: order, decree, judgment. Order होगा वो कोई भी हो सकता है. जैसे A और B ने केस फाइल किया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि मेरे और A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि A will sell me 10 kgs of fruits at 100 rupees, let's say, या 1000 rupees. ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ. सो केस फाइल हुआ क्योंकि A is claiming कि मैंने फ्रूट्स तो दे दिए इसको, इसने मुझे 1000 रुपए नहीं दिए, इसने मुझे 500 रुपए दिए. सो दिस इज द होल केस. नाउ A और B बोथ गए कोर्ट में. कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है. कोर्ट ने कहा that bring the contract before the court. The contract between A and B, please present it before the court before the next date. That is called order. कुछ भी order. Order can be anything that a court says, list the matter on another date or submit the written statement. ये सारे order हो गए क्योंकि हर date पे कुछ ना कुछ होता है ना. Court whatever do, adjournment भी हो गया, वो भी order कहलाता है. So this is order. हर डेट पे जो भी कोर्ट के सबमिशंस होंगे, कोर्ट के रिकॉर्ड्स होंगे, दैट इज ऑर्डर. इंटरिम ऑर्डर हो जाएगा जब इंटरिम आप केस के चलते चलते आपको रिलीफ मिली. आपको जैसे कोर्ट ने बोला कि ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है, 10 kg फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ फॉर 1000 का केस हुआ था, इसने 500 करे हैं. कोर्ट ने कहा कि आप 500 ए बी, व्हाट यू डू इज यू सबमिट 500 रुपीज बिफोर द कोर्ट. अगर आप के अगेंस्ट केस डिसाइड हुआ तो 500 विल गो टू ए. अगर आपके अगेंस्ट डिसाइड हुआ, आपके फेवर में डिसाइड हो, तो आपको 500 वापस मिल जाएंगे. तो ये एक इंटरिम ऑर्डर
काइंड ऑफ जो मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था ए और बी की, बोला कि ए और बी की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, बी इज लिविंग इन दैट प्रॉपर्टी, ए इज सेइंग दिस इज माय प्रॉपर्टी, सो बी ने ऑर्डर लिया कि आई शुड नॉट बी वैकेटेड आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मतलब ये कुछ एक रिलीफ मिली है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। कोर्ट ने बस इतना बोला दैट बी कैन लिव इन दिस प्रॉपर्टी, दे हैव नॉट सेड ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई या बी इज द ओनर ऑफ इट। सो ये इंटरिम ऑर्डर हो गया, द ऑर्डर ऑफ नॉट एविक्टिंग बी। डिक्री हो गई फाइनल ऑर्डर, केस चला 1 साल 2 साल, डिसाइड हो गया कि ये प्रॉपर्टी ए की है या बी की है, लेट्स से डिसीजन आया कि ए की प्रॉपर्टी है, सो दैट ऑर्डर डिसाइडिंग दैट दिस प्रॉपर्टी belongs to A will be called decree. So this is goes like this: order on every date, interim order during the pendency of a case, कुछ relief है, decree is the final. Is decree and judgment same thing? No, decree and judgment are different only in the sense decree short होगा, judgment में सारे reasoning लिखे होते हैं, so judgment is called the explanatory version of decree with all the justification कि A की property क्यों है, B की property क्यों है, although I'm repeating all of these things क्योंकि मैंने decree और judgment का भी बता दिया था. Any other question? Thank you, ma'am. I'll move ये एक बार जल्दी से short में देख लीजिए, then we'll have to move to the other. Okay, so like I said that drafting is divided in two parts, pleading and conveyancing. पहले हम आते हैं pleading पे कि pleading क्या होती है. Pleading is means to state and argue the case. मतलब आपकी जो जितनी भी आपने बातें लिखी हैं अपने केस फाइल में, all of that you have written in your case file will be called pleading. So pleading is means to state and argue the case, plead the case. जो हम कोर्ट में जो लैंग्वेज भी यूज करते हैं, that is called plead. What your pleadings are, what are you pleading, what have you written in your pleadings. So it means the written submissions जो हमने केस अपना बनाया है, that is called pleading. Pleading refers to written submissions of the court proceedings submitted by both the parties. So जो केस मैंने फाइल किया, which will be called, let's say, suit in civil cases. So the suit that I have filed is a part of pleading. जो opposite side ने evidence file करे या उसके defense में जो बोला है, that is also a part of pleading. Pleading consists of the facts, claims, defense, and respective contention of the parties that are reduced in writing. So pleading में facts लिखे होंगे, what is the story, क्या हुआ, कहाँ से लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई का root cause क्या है, claims, what are you claiming, yeah, this is my property or I deserve a compensation of 1 lakh rupees, etc. etc. So ये सारे claims हो गए. Defense, जो opposite side के defense आएंगे, और जो भी आपस में contentions होंगे लेके, and when they are put it into writing, everything goes in writing in court. Everything has to be in writing in court क्योंकि जो मुंह बोली बात होती है, that does not hold as much value as written things, which is why everything goes in writing in court. So whatever goes in writing from both the parties is called pleadings. जो orders आएंगे, that is not part of pleadings, they are simply called orders. So the court की proceedings के order आएंगे, वो court order कहता है. But जो party submissions करती हैं, that is called pleading. Pleading में क्या क्या आ जाएगा? Lawsuit, a civil suit file हुआ है, that will be a part of pleading. Petition, any petition, writ petition, special leave petitions, transfer petition, divorce petition, maintenance petition, इतनी सारी petitions जो भी होती हैं, वो भी सारी pleading का part होती हैं. Motion और hearing, hearing भी जो आप argue भी करते हो, जो आप argue करते हो, उसको जो written में भी देते हो, that is also part of pleading only. And it includes complaint, answer, reply, rejoinder, motion, declaration, memorandum of points and authorities. बहुत सारे points, अलग-अलग words हैं जो हम अभी detail में पढ़ेंगे, so you don't have to get confused, but these are few of the things that forms part of the pleading. Otherwise pleading की जो अलग-अलग type के case file होते हैं, सबके बहुत अलग-अलग नाम है, so सबके नाम भी आपको पता होना चाहिए, that will come when you get into practice only. But जो भी कुछ अलग-अलग type के case file होते हैं, whatever submissions, written submissions goes into court, that is called pleading. Pleading में बहुत simply, if you understand, then it will include facts of the case,
It will include claim कि A और B क्या dispute है आपस में, तो fact है कि क्यों कि A और B आपस में लड़ रहे हैं कोई property को लेके, issue क्या है कि वो क्यों लड़ रहे हैं, कितने की property है, कहाँ पे situated है, और उसका ओनर कौन है, किसके फेवर में ये प्रॉपर्टी के कागज जो है उस पे किसका नाम है. All of these will be the facts of the claim, facts of the case. Claims would be A saying this is my property, so declare this as my property. मुझे टाइटल दे दो इस प्रॉपर्टी का, that will be claim. Defense, B will say this is my property because I have been living here for 12 years and this came to me from my forefathers, etc. So जो भी defense होगा, that will go in writing. That will also form a form of freedom. Documents also. So जो भी ownership के लिए कागज जमा करेंगे दोनों parties, that could be sale deed, that could be settlement deed, relinquishment deed, anything. It could be anything. जो भी आप documents भी file करें, that will also form part of pleadings. Divorce petition भी pleading का part है. तो A और B में husband wife में लड़ाई हो रही है, कब शादी हुई, किस हिसाब से शादी हुई, हिंदू मैरिज है या वो मुस्लिम मैरिज है या फिर इंटर रिलीजन मैरिज है या फिर क्रिश्चियन वेडिंग है, जैसे भी है, अब क्यों लड़ रहे हैं आपस में और कौन सा ग्राउंड्स में वो डिवोर्स मांग रहे हैं, क्या वो म्यूचुअल डिवोर्स है, क्या वो क्रूअल्टी के ग्राउंड्स पे डिवोर्स है, व्हाटएवर दिस थिंग्स, ये जो ऑल टुगेदर सारे सबमिशंस जब होंगे तो ये डिवोर्स पिटीशन करेगा. ओके, बीच में अब एक या चंद्रिका देव का. Ma'am, is pleading and prayer both same? No. But prayer is a part of it. Okay. Okay. Thank you. This is match the following. जो भी हमने इतना terms देखे हैं, तो just to check how many of you remember. मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ इसमें, जितने भी लोग यहाँ present हैं, मुझे एक बार नाम. Okay, now I can see. संदेश अग्रवाल. Sandesh Agarwal, can you hear me? Hello. Hello. Yeah, can you hear me? Hello. Okay, Simran Chaudhary. Preeti Jain. Yes, ma'am. Okay. So plaintiff, appellant, कहाँ कौन से उसमें use होएगा, and can you match it with the opposite? What is the opposite of appellant? Appellant would be respondent. Like it would match with respondent. Should I say the next one also? No. And appellant is it used in criminal or civil or in both? So it's used in both criminal and civil. Okay, next question is for Dhruti. Yes, ma'am. Plaintiff, इसका opposite कौन होगा? Match. Can you match the plaintiff with its opposite? Yes, plaintiff will be defendant, and it is used in only civil cases. Okay. Next, I would ask Anushka Haldar. Anushka Haldar, can you hear me? The next is Achal Saluja. Ma'am, petitioner will match with respondent. And it is, I guess, used for both civil and criminal. Okay, great, correct. Next we have, I'll ask Aniket Bafna.
Devansh Sangvi. Hello. Yeah. Ma'am? Aniket Yes, sir. Babu. Yes. Yes, ma'am. Last, complainant. What is the opposite side of complainant? Accused, ma'am. And is it used in civil or criminal? Criminal. Okay, great. Ma'am, I have one question, ma'am. Mm-hmm. Like in family terms, what we can use? Is it fine for petitioner and defendant? Yeah, petitioner, Family. respondent, petitioner and respondent are used. Okay. Thank you. ओके ये बहुत बेसिक रूल्स हैं प्लीडिंग के और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हर जो भी आप केस फाइल कर रहे हो, जैसे अभी हमने एक दो टाइप के केसेस अभी डिस्कस करें, वो ये डिस्कस करें सिविल केस, फैमिली केसेस, डिवोर्स पिटिशन और क्रिमिनल केस. जो भी तरीके का केस जाता है, हर तरीके का एक फॉर्मेट, हर एप्लीकेशन, हर प्लीडिंग का एक फॉर्मेट होगा. अगर आप डिवोर्स पिटिशन फाइल करो, then there will be a specific format which also differs from court to court and place to place. If you are filing a writ petition, it will have a format. It will differ from court to court and place to place, which is a little bit of problem, for advocates. But उनको हर कोर्ट का हर अलग तरीके का एक फॉर्मेट देखना पड़ता है जब भी वो किसी कोर्ट में जा रहे हैं. तो if I'm filing a case in Allahabad High Court, it could be different from the case that I'll be filing in Delhi High Court. Similarly, it could be different if I'm filing in Bombay High Court. So इन सबके अलग-अलग चीजें तो होती हैं और इनको कैसे टैकल करना है, इनको कैसे इजी करना है, that is going to be a part of this series, because it's not possible that you know all of the rules, you know how a case is filed in Allahabad, how a case is filed in Bombay. Or agar aap, if you're practicing in Bombay High Court and you have to go to Allahabad High Court, then if you're using the same format as in Bombay High Court, iska matlab aapke case mein defects lag jayenge, which is what आपका केस पास नहीं होगा. Okay, so सबके रूल्स तो अलग हैं, बट एक ही कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हर जगह फॉलो होते हैं, which I have put it down. In High Court and Supreme Court, it's very specific that you use Times New Roman, font size 14, line spacing 1.5 होनी चाहिए, and left and right alignment space होनी चाहिए 4 centimeter. You have to follow this everywhere, and even if you are not filing a case in High Court or Supreme Court, it's advisable that you use this thing, क्योंकि आपकी आदत हो जाएगी फिर वो. The reason behind this is readability. It should be very easily visible and readable to the judges and to the person who are reading it, especially because everyone here involved are generally of old age. So readability easy होगी तब वो पढ़ने में भी easy होता है, and it goes easily in your head also. So no matter what you're writing, and this is advisable in writing documents also, you follow the same thing. Times New Roman, font size 14, line spacing 1.5, and corner spaces left and right 4 centimeter. If you do not follow this, there are surety that Supreme Court and High Court will not pass your case. वो defect लग के रुके रहेगा. So High Court और Supreme Court में बहुत specific है that you follow these things. District Court में इतना नहीं चलता है, थोड़ा चल जाता है if you use 13 font size, if you use any other font size, as long as it is not unreadable. It's not that you can use 10 font size because that will be too small. So as long as it is 14 ka 13 kar diya ya 14 ka 12 kar diya, it's acceptable, otherwise it's not. Always justify your text. Justify meaning you have to center, left, right alignment, सबको justify करके रखना होता है. Use paragraphs and required subparagraphs. Paragraphs are necessity. You have to submit in paragraphs, para 1, para 2, para 3. It's also important because when you're arguing, you have to take the quote to please refer to page number this, and please refer to para 12. So which is also why it's important and it's compulsory to write in paragraphs so that it doesn't take time for court to identify where you are reading from और कहाँ पे आप ले जाना चाह रहे हो उनको. And कुछ common words होते हैं reading में जो use होते हैं, that it is humbly submitted. So when you start writing or when you start drafting, these should be in your mind all the time. Humbly submitted before this honorable court.
it is pertinent to mention here that जिस पे आपको emphasis करना हो जिस बात पे तो उसके लिए ये word use होता है. It is pertinent to mention here that it is submitted before this honorable court, tribunal, forum. It is reiterated. अगर आप कोई बात repeat कर रहे हो तो कुछ basically एक terminology है जो आपको अपनी practice में लानी होगी. And ये सब terminology इसलिए बनाई है to submit before the court with utmost respect. That it is humbly submitted before the court, and all of these words, honorable court and learned counsel, my learned friend, all of these words that you write, the learned high court or the honorable high court, the learned lower court, ये जो terminology है, the only purpose of doing this is that we give utmost respect to everyone in the court, be it opposite party, be it court, be it judges, be it anyone. We should have very respectful language in our submissions. Nothing should sound and should read very unpleasant or informal. आपको गलत से गलत बात भी करनी है, that also you have to do with utmost respect. Appearance is as important as the quality of writing. जो आप लिख रहे हो उससे ज़्यादा important है कि that it should look beautiful, which is why justify your text, same font. These are very very small things. आपको लग रहा है कि मैं क्यों बता रही हूँ ये सब. But ये छोटी छोटी चीजें करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगती है. These are small things that matters a lot. There should be no imperfections as much as possible. At least ये छोटी छोटी चीजें अगर आप perfect करके चलोगे, you have no idea how much of difference it makes. Because when you go to courts, when you see especially in lower courts, ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती हैं. That says a lot about a lawyer. So you should, just by following, and you should follow these things from day one. Even when you're giving your exams, it's better. I advise you to follow the same thing. Online है या फिर अपने assignment submit कर रहे हो तो आप ये same ये चीज pattern follow करो. अगर आप answers लिख रहे हो, आपके assignments है तो आप words use करना शुरू कर दो. Humbly submitted, etc. Honorable court. तो अभी से आप आदत बनाओगे तभी वो आपकी language में आएगी. और जब आप practice करोगे then automatically it will become a part of your language. But no laziness in putting the things in paragraphs. सब कुछ same दिखना चाहिए, सब कुछ, everything should look very beautiful because it impacts judges a lot. Rules of pleadings are governed by procedural laws. So जैसे मैंने बताया, there are lots and lots of cases and lots of types of cases. Civil का अलग procedure होगा, criminal का अलग procedure होगा. अगर वो CBI का case है तो उनका अलग procedure होगा. अगर high court में case जा रहा है तो आपको एक और सेट ऑफ रूल्स अलग पढ़ना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो उनके अलग सेट ऑफ रूल्स हैं, एक अलग फॉर्मेट है सारी चीजों का. अगर आप ट्रिब्यूनल में जा रहे हो, अगर आप एनक्लैट एनसीएलटी में जा रहे हो तो वहाँ के अलग रूल्स होंगे. जैसे एनसीएलटी और एनक्लैट में सबसे ज्यादा परफेक्टली आपको केस फाइल करनी होती है. सुप्रीम कोर्ट में फिर भी एक बात को अगर आपने इधर थोड़ा ऊपर नीचे कर रखा है तो एक बार को सुप्रीम कोर्ट में वैसे इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. हाई कोर्ट में, लेट्स से हाई कोर्ट में आपने थोड़ा इधर उधर नीचे कर दिया तो चल जाता है. कुछ छोटी मोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे लाइन स्पेसिंग अगर एक आध पेज में मिसिंग है तो चल जाएगा. अगर आपका एक पेज का फॉन्ट 40 नहीं है तो चल जाएगा. बट सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में इन चीजों पे भी आपके केस पास नहीं होंगे. एंड व्हेन यू आर वर्किंग सो मच ऑन अ केस, इट शुड नॉट हैपन दैट इट शुड टेक टाइम and your energy and client's time is wasted because आपका font size 14 की जगह 13 है. So everything should be pitch perfect in your drafting. Now second part, conveyancing. But before I come to that, again, any other questions? Preeti Jain. Ma'am, is it necessary to use like the heavy terms when you are submitting your pleading in the High Court or Supreme Court, or you can just like use the simple language? See, you should use simple language along with these words. मतलब to answer your question, कहीं लिखा नहीं है कि आपको ये word necessarily use करने हैं, but it's a matter of practice. कुछ words हैं जो आपको compulsory लिखने होंगे, जो आप नहीं लिखेंगे तो उसमें defects लग जाएंगे, which is जब हम फॉर्मेट से भी देखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा देखना. नॉट इन टुडेज बट इन कमिंग टाइम्स अलग अलग जब हम फॉर्मेट्स देखेंगे. सो इट विल बी, जब भी केस होता है तो उसमें शुरू में ऐसे लिखा होता है बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द अदर ऑनरेबल मेंबर्स. उसके नीचे लिखा होगा
it is it is humbly prayed before this. जैसे prayer भी एक तरीके से लिखी जाती है. So prayer का कैसे केस स्टार्ट करना है उसमें ये भारी भारी वर्ड यूज करना कंपलसरी है क्योंकि वो ऑलवेज इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट ओनली. So it's unsaid necessity to do, but when you're in your writings, it's not compulsory, but it's advisable, 100% advisable that you use language like this. If you will try to make it very common person like, then it's just going to make an impression on judge. That's the only thing, and impression on judge is a very big thing in courts. So आपको अपना impression lose नहीं करना if it is only for 2-3 words. And honestly, when you'll get into practice, right now or in starting, you may feel like these are heavy words, but थोड़ा time बाद practice करोगे ना, आपके common आपके मुंह से ये words निकलने शुरू हो जाएंगे. Not just in your drafting, you start talking like this because you're always listening to these words and every time. So कोर्ट में बहुत ये जो एक तरीके से बोलूं एरिस्टोक्रेटिक और पुराने राजा महाराजाओं की तरह से बात की जाती है. अभी भी जैसे अगर ऐसे यस नहीं बोलते कोर्ट में ज्यादातर we say please my lord, we don't say generally sure, yes, we don't say it like that. Instead of that we say please, obliged, much obliged, very obliged. So it is that kind of a thing. आपको शायद कोई डांटे ना अगर आप yes बोल दोगे, sure बोल दोगे, but it's just makes you a kind of a person, it makes you kind of a lawyer. And also honestly it is expected of you. The kind of how judges are, how their attitude is, and how it's a very system that is coming out of British era. So you are kind of expected to talk like prince and princesses and expected to treat judges like kings and queens. So you always do like this, bow down before the court, bow down when you enter a court, bow down when you leave the court. You use words like obliged, apologies, sorry, you don't say sorry, you say apologies. And so all of these things, it's good to use. It just says what are you as a lawyer. Any other questions? Is it clear, Preeti? Yes, ma'am. Any other questions on so far? Okay, then I'll move to next part. Conveyancing. अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया है वो काफी कोर्ट ओरिएंटेड था कि कोर्ट में क्या होता है. Now conveyancing is a extra judicial thing, मतलब कोर्ट के बाहर की चीज. लॉयर्स का काम सिर्फ कोर्ट केसेस ड्राफ्ट करना नहीं होता है. They also have a job of drafting contracts. They also have a job of drafting sales deed and lease deed, rent agreements, agreement between the company and client. So all of these will never go to courts. So if you are going in a company and you get a job, there will be a contract given to you that will be drafted by an advocate. But that will never go into court unless and until there is a dispute between the company and the employee. So all of this contract and deeds, settlement agreements, agreement between two parties, arbitration agreements, etc. Everything is a part of conveyancing, which is the other side of law. And generally, if you go into corporate law, if you join firms, or if you join as the in-house counsel, you will be more involved in conveyancing than pleadings. मतलब आपको court की proceedings आपको नहीं बनानी होंगी, whereas you'll have to make documents and draft documents for companies and for private people. So conveyancing does not include court proceedings. It refers to documents by which a property is transferred from one source to another. Not just property, rights also. So it is, let's say there is a sale deed of property. So that instrument we are calling that document. So that document in which A is selling the property to B at cost of 1 crore rupees, at cost of 50 lakh rupees, what are the terms of agreement that this person will pay me in 1 month in equal installment, and this person will not build, let's say, more than 3 floors on this property. So all of these will be a part of agreement between the two parties, which is called conveyancing.
terms of contract and agreement reduced in writing. Whatever the contract could be, there could be any agreement between me and you, between two parties, between three parties, four parties, between two companies, anything, जो भी उनका होगा, that will be a part of conveyancing. And conveyancing can form a part of evidence of the court. So, like I said, that there is a contract between a company and employee that before leaving, the employee has to give a notice of 1 month. And if the employee doesn't give a notice of 1 month, their 1 month salary might be cut. Or whereas if the company fires an employee without 1 month's notice, they will give them a compensation of, let's say, 30,000 rupees. So, अब हुआ क्या? The company, ये जो contract होगा, ये conveyancing का part होगा, एक document होगा. Employee contract हो जाएगा. Now, company has fired this employee, and employee asks for where am I 30,000 rupees because you have fired me without 1 month's notice. Company refuses to give 30,000 rupees of compensation. So when the employee will go into court, ये evidence का part बन जाएगा. This agreement जहाँ पे ये लिखा होगा that company have to pay 30,000 rupees in case an employee is fired without giving 1 month's notice, that will form of evidence. और ये suit कौन सा होगा? Can anyone tell me what kind of suit will it be? अगर ये issue गया court में, कौन सा case होगा? Civil case. और जो employee होगा वो क्या कहलाएगा court में? Plaintiff and defendant. Plaintiff and the company. Basic rules of conveyancing. Conveyancing में भी कोई specific format नहीं है, but उसमें भी आपको ये Times New Roman font 12 या size रख सकते हो, line spacing. You just have to make sure that it is very very readable. हर conveyancing, हर document का भी, जब दो contract होंगे, sale deed का भी, lease deed का भी एक format होता है, party 1, party 2, ऐसे ये सब जो formats होगा, आपको उसी format में बनाना होगा, और उसके बाद आपका registration जो process होगा वो करवाना होगा. So ये basic rules of conveyancing में ही आ जाएंगे. और like कोर्ट में भी अलग अलग चीजों के नाम होते हैं. कन्वेंसिंग की ड्राफ्टिंग करते हुए भी अलग अलग वर्ड्स यूज होंगे, जैसे प्लीडिंग्स में प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट एटसेट्रा, ये सब वर्ड यूज हुए हैं. कन्वेंसिंग में ज्यादा नहीं होते. लॉजिक होता है ये कि जो ट्रांसफर कर रहा होता है वो जनरली OR उसको लग जाएगा, ट्रांसफरर. मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, then I'll be called transferor, the other person will be called transferee. It's not that conveyancing होगा that Simran is transferring the property to Achal Saluja. It will not be written like that. It will be written like transferor has promised to transfer the property to transferee at the consideration of this amount. Lease deed होगी तो words use होंगे lesser and lessee. I am the lessor and I have agreed to lease my property in favor of, let's say, Sandesh Agarwal, who's the lessor. So ये जो छोटे छोटे terms हैं, ये conveyancing में use होते हैं. इसका basic सबसे easy and simple logic समझने का, ये जो transfer कर रहा होता है खुद कोई भी, के end में R हो जाता है, OR, वो lesser. Seller सबसे easy तरीका याद करने का. Transferor जिसके फेवर में होगा उसके एंड जनरली डबल ई लिखा होगा, lessee, transferee, as simple as that. So उसमें भी party 1, party 2 करके भी यूज कर सकते हैं conveyancing में. That depends on format also. These are basic things of how you have to form the terminology that you have to use in conveyancing. Okay, next, before I go ahead, we can use any language for pleading and conveying, na? Yes, very important questions. And क्योंकि हम दो लोगों के बीच का पर्सनल मामला है वो, सो हिंदी में भी हो सकता है, मराठी में भी हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, as long as both of them understand and agree. And that when we are submitting it in court, then court has a specific restriction for language? Yeah, okay, that's also a very good question.
अगर आपका केस लोअर कोर्ट में जा रहा है, लेट्स से आपने मराठी में अपना डॉक्यूमेंट किया हुआ है, और क्योंकि लोअर कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लैंग्वेज जनरली रीजनल होती है, तो यूपी में हिंदी चलेगी लोअर कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में आई एम प्रीटी श्योर मराठी ही चलती है, कर्नाटका में कन्नड़ चलती है, तो वहां पे सारे ऑर्डर, वहां पे जो केसेस आते हैं, इंग्लिश भी एक्सेप्टेबल होगी, बट मोस्टली रीजनल लैंग्वेज चलती है। तो आपने अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मराठी में है एंड आपका केस महाराष्ट्र की लोअर कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, देन यू डोंट नीड ट्रांसलेशन. बट एज सून एज यू विल कम इनटू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यू विल हैव टू फाइल ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ इट along with an application. एक अलग से एप्लीकेशन भी जाएगी that this translation is correct, और आपको वो पूरा डॉक्यूमेंट होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा, नॉट इन द रीजनल लैंग्वेज. Okay? Okay, next. Yes, ma'am. Thank you. Yeah, Khaja Mohiddin and Preeti want to ask a question. I'll let Preeti go first. Ma'am, basically, convincing is act as a proof, right? Yes. Also, if it is submitted to High Court or Supreme Court, so do they really recognize all that, the font size and the spacing and everything? Yes. They have a whole team who only looks into these things. कि आपका font size 14 है या नहीं, and honestly they just look at the document and find out if it is 14 or not. So there is a whole team working on these things, and I think in some time it will also go digitally. That means you cannot make computer आ गया तो बिल्कुल ही chance नहीं है mistakes का. But everyone recognize these content text. If you read Supreme Court rules, आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा. ये मैं अपनी तरफ से नहीं उतारी, वो रूल्स में मैंने लॉ से ही लिया हुआ है. हाई कोर्ट में भी आपको दिखा हुआ मिल जाएगा एंड सुप्रीम कोर्ट में. Okay, next, someone else wanted to ask question. Khaja Mohiuddin, yes. Madam, the small doubt only, but pleats also reduce in writing and conveyance also reducing in writing. Yeah. Will you please explain me, madam? प्लीडिंग्स आप ऐसे समझ लीजिए, जो भी कोर्ट में राइटिंग में जाएगा उसको प्लीडिंग कह रहे हैं. जो चीजें कोर्ट में नहीं जा रही हैं, जैसे आपने मुझे रेंट पे दिया है मेरा अपना घर, तो हमारे बीच में एक रेंट एग्रीमेंट होगा. ओके. वो कन्विंसिंग है. ओके. ठीक है, वो रेंट एग्रीमेंट विल बी कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट, और उसकी ड्राफ्टिंग को कन्वेंसिंग कह देंगे, उसको बोलेंगे कन्वेंस. ओके. अब जब वो कोर्ट में जाएगा तो वो एविडेंस की तरह जाएगा, वो प्लीडिंग तभी भी नहीं कहलाएगा. इट विल ओनली बी अ पार्ट ऑफ प्लीडिंग. प्लीडिंग का जो लॉयर सबमिट करते हैं, आप आई थिंक इट विल बी इजियर टू लाइक दिस, जो लॉयर्स अपना केस फाइल सबमिट करते हैं वो प्लीडिंग होगी. ओके मैडम, थैंक यू. ओके. And another way to also remember is pleadings are always directed towards court. Convincing are directed towards people. उसमें लिखा होगा कि party 1 is required to do this, party 2 is required to do this. Pleadings में क्या होगा, लिखा होगा it is submitted to the court that plaintiff was present at this time, plaintiff did this, defendant did this. तो वो जो हम कोर्ट से बात कर रहे हैं वो pleadings है. Okay madam, thank you. Preeti, yes. Ma'am, convincing is related to just property related matters. No, it can be anything. Okay. Generally, जो हम common person language में property समझते हैं सिर्फ property उसको. But when you come into legal language, property and can mean a lot of things. जो आपकी salary है वो भी प्रॉपर्टी में आ जाएगी, जो आपकी एफडी है वो भी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, जो आपने शेयर्स खरीद रखे हैं वो भी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं. सो जनरली किसी भी असेट या किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रीट कैसे करना है, उसका डिवीजन कैसे करना है, ये कन्वेंसिंग. क्योंकि मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो किसी चीज को लेकर ही होते हैं, या तो घर होगा या स्टॉक होंगे या कुछ बैंक अकाउंट होगा या एफडी होगी, मतलब कोई चीज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, कुछ दैट कैन बी टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बोथ, उसको लेके जो भी डिसाइड हो रहा है वो कन्वेंसिंग होगी. और कभी कभी इट कैन बी
Ma'am, it means that property will is also conveying. Yes, will is conveying. The father which makes a will of property, that is conveying. Correct. Okay. So should I go ahead? Ma'am, Yes. suppose we have a patent, like we want to file a patent or something, so even that will come in conveyancing, right? अगर आप पेटेंट फाइल करते हैं तो एक्चुअली इट्स मोर लाइक फिलिंग अ फॉर्म. उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे, written some things which might include documents of company, some contracts of company, that is conveyancing. But ये जो पूरा whole जो specific documents वो conveyancing होंगे. Otherwise patent जो process होता है, it works just like registration. So it may or may not include any drafting at all. So, ma'am, basically we can say that conveying is an agreement between two parties. Yes, two or more parties. Ma'am, but when we see that when we make a rent agreement are of two types, ma'am. That one is of notary and one is of registered, ma'am. So registered agreement means what? What is difference between that, ma'am? Because registered agreement is given to the court. रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में पूरी जो प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, इंक्लूडिंग द फीस, जैसे जो लॉ है उस रेंट एग्रीमेंट का, वो ये होता है कि आपके जितना रेंट है उसका एक पार्ट शुड बी गिवन एज अ फीस, देन एंड यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड बिफोर दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी, तब जाके वो रजिस्टर्ड वो माना जाता है. नोटरी का प्रोसेस थोड़ा सिंपल होता है, जो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे हो जाता है. तो ये दोनों का डिफरेंस है कि जो अनरजिस्टर्ड नोटरी वाला है, इट इज मोर ऑफ लाइक एन अग्रीमेंट, अ जनरल अग्रीमेंट, राइट, कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को दी है. वो जो रजिस्टर्ड की आप बात कर रहे हो, वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, विच इज क्लोजर टू सेल अग्रीमेंट रादर देन अ जनरल अग्रीमेंट. क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हो तो भी उस पर सेम स्टैम्प ड्यूटी लगती है, सेम फीस लगती है, विच इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट. 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे अलग फीस लगेगी, 10 लाख की प्रॉपर्टी पे अलग फीस लगेगी. Then the court is involved in नहीं, registrar are involved in it, and notary वाले. So it is also conveying only. Yes, only conveying. Only. Both are conveying. Yes, ma'am. Okay, so I'll move forward. Basic tips on pleadings. ये जो है एक ये लॉ है, इट्स लाइक यूनिवर्सल रूल दैट यू always remember, and it is very very important to remember that nothing can be prayed and argued beyond the pleadings already submitted before the court. मुझे एक interesting I'll share this thing with you. जब हम लोग कॉलेज में थे तो when I was in college, so prayer में हम लोग लिखते हैं ऐसे prayer clause that decide the case in favor of A, pay the compensation of 15 lakh to A from B, and any other remedy, any other relief that this court deems fit. So in college we were always told that it's very important to write any other remedy that is suitable for the court, that the courts deem fit. ये common language हमेशा use होगी prayer clause में. अब ये सब जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप एकदम डिटेल नहीं कर पा रहे हो तो don't worry about it, because we'll give you a lot of formats which will help you in long term. So, but just today I'm just giving you orally these things, that it is written. जब भी आप prayer clause बनाते हो, जब भी आप कोई prayer लिख रहे हो, तो it's compulsory to write, and it's not compulsory, but I'm telling you, consider it compulsory to write any other relief that this court may deem fit. So इसका कहने का मतलब है कि आप कि आपने कोर्ट से 2 ही चीजें मांगी हैं, कॉम्पेंसेशन में 10 लाख रुपए, और कहा है कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस हो जाए, जो ये यहाँ पे रह रहा है ये खाली कर दे. इन दैट केस आपने 2 प्रेयर मांगी, बट आप ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस आपने कहा कि मेरा लॉस ना 10 लाख रुपए और ज्यादा है, और तो मैं 10 लाख रुपए और क्लेम करना चाहती हूँ. सो दैट
you can only say before the court, which will come under the category of, which will come under the head of, or you can argue that, and this is a relief that if this court may deem fit, may give to me कि extra 10 lakh rupees फिर मुझे इतने का लॉस हुआ है, but मैंने अभी तक प्ली नहीं किया है. So कॉलेज में हमें ऐसा बताया था कि it's very important to write this, क्योंकि अगर आप कुछ चीज भूल जाते हो तो आप हमेशा आर्ग्यू करके ये बोल सकते हो कि हमने लिखा हुआ तो है अपने प्रेयर क्लॉज में any other relief, which I have not included. But when I came into practice, that's not how it works. It never works. If you have not written anything, if you have not asked for anything in your pleading, that will not be given to you. कोर्ट का एक बहुत सिंपल रूल है, जो आपने मांगा नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा. It's a very very simple and basic rule, which is why जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो आप जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं एक केस में क्या क्या मिल सकता है, आप क्या क्या क्लेम कर सकते हो, क्या क्या डिफेंस ले सकते हो, वो सब अपनी ड्राफ्टिंग के टाइम में आपको इंक्लूड करना जरूरी है. अदरवाइज अगर आप बाद में कुछ कहानी बना के लेकर आओगे, court will always say you did not say this before, you are only coming up with this now, and it's a cooked up story. So it's very important, and it's something that you should always remember in your head. Nothing can be prayed and argued beyond the pleadings. You will hear judges say this a lot, that you are going beyond your pleadings. You have not asked for this in your pleadings. Your relief is beyond your pleadings. मतलब आपने जो plead नहीं किया अभी तक, आपने अभी तक ये relief जो नहीं मांगा है, वो आप कोर्ट से नहीं मांग सकते. एंड ऐसे केसेस होते हैं बहुत बार कि लॉयर्स, जैसे यही प्रॉपर्टी वाला केस है, अगर एक अच्छे लॉयर के पास आए वो कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करते हैं. बहुत अच्छे लॉयर के पास आएगा तो वो लोग कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करने के लिए थर्ड पार्टी हायर करते हैं जो कि कॉम्पनसेशन अच्छे से कैलकुलेट कर सके. तो जैसे कोई भी अगर डैमेज हुआ तो आप एक तो कॉम्पनसेशन एक तो रहेगा ही रहेगा, जो आप रिलीफ मांग रहे हो. So a good lawyer always put together as many reliefs as they can that are available in law for their client. एक जो खराब एडवोकेट जो अच्छे से रिसर्च नहीं करे होंगे, वो कुछ क्या पता वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट तो बोल देंगे दिस प्रॉपर्टी शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए, बट जो उसने बी ने वहां पे शॉप बना के रेंट खोला, केस 10 साल चला, उसने रेंट बिना अपनी प्रॉपर्टी लिए जो रेंट 10 साल तक रेंट अपनी पॉकेट में किया है, वो भी तो एक ही होता है, बिकॉज बी वाज नॉट ऑन द ओनर. सो इफ यू मिस दिस थिंग तो कितना लॉस, बड़ा लॉस हो जाएगा. एंड दिस हैपेंस, आपको लग रहा होगा इतनी स्टूपिड मिस्टेक कौन ही करता होगा, बट दिस इज व्हाट हैपेंस इन कोर्ट. लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डोंट रीड लॉ, they don't read judgments, which is why it's difficult for them to calculate what are the reliefs that are possible in this situation. डिवोर्स केस होगा तो आप मेंटेनेंस भी फाइल कर सकते हो, आप डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस फाइल कर सकते हो, आप इंटरिम रिलीफ के लिए भी फाइल कर सकते हो, आप ये भी फाइल कर सकते हो कि मुझे घर से ना निकाला जाए जब तक ये केस चल रहा है. तो इतनी सारी चीजें, अगर आप एक भी चीज मिस करोगे तो that will cause loss to your clients, so which should not happen. इसलिए ये वाली बात आप हमेशा याद रखना कि that you, जब आप केस बना रहे हो, you research so well that you do not miss out anything. आप एक्स्ट्रा चीजें बोल दो, एक्स्ट्रा चीजें मांग लो. आपको लगता है 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन मांगना है, आई एम टॉकिंग द मॉनेटरी टर्म सो दैट इजियर टू अंडरस्टैंड, बट जनरली ऐसा कोर्ट में पैसों की बातें कम और बाकी राइट्स की बातें ज्यादा होती है. सो आपको लग रहा है कि 10 लाख का कॉम्पनसेशन बन रहा है, आप 15 लाख मान लो, कोर्ट अग्री नहीं करेगी, आपको 10 लाख दे देगी या फिर 8 लाख भी दे देगी. बट अगर आपने 10 लाख का 8 लाख कर लिया तो वो लॉस है, which it should not happen. और हमेशा आपको हर चीज को जस्टिफाई भी करना होगा. ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दे रहे हो कि हमें ये चाहिए, ऐसा हमेशा नहीं होता. तो आपको हर चीज को जस्टिफाई भी करना होता है, क्यों हम डिजर्व भी करते हैं. सो फर्स्ट जॉब ऑफ ड्राफ्टिंग एज अ ड्राफ्टर इज टू रीड and find out what are the reliefs, because एक बार जो आपने लिख दिया वो पत्थर की लकीर, it will be permanent and it will not change unless and until you file amendment of pleadings. या तो आप अपना पूरा केस चेंज करोगे, एक अलग से एप्लीकेशन डालोगे, प्रेयर चेंज करो, which always cause you loss या फिर prejudice तो आपके अगेंस्ट थोड़ा हो जाएगा कि आपने चेंज क्यों करी. But it's a possibility, but it's good that you prepare your case once and for all, चाहे वो 10 साल तक चले, आपने टेस्ट केस प्रिपेयर किया हुआ है. करेक्ट ग्रामर, ये सब भी यूज करना बहुत जरूरी है. और जब भी कोई केस होती है, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना.
इसके बिना भी केस एक्सेप्ट नहीं होते. लास्ट के 3 पैराग्राफ्स शुरू तो आप फैक्ट्स और स्टोरी से करते हो, पर लास्ट के 3 पैराग्राफ क्या होंगे? ज्यूरिसडिक्शन. ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? होल टेल मी. किसी को ज्यूरिसडिक्शन का मतलब पता है? Power of the court to decide upon certain matter or the matter which has come before it. Yeah, like more. There are several types of jurisdiction, like one of them is territorial jurisdiction. One cannot file a case of Delhi and Bombay High Court. Correct, very correct. Jurisdiction is basically power of the court, the area of the court or the boundary of the court, जिसमें वो decide कर सकते हैं. तो बहुत अलग-अलग टाइप की jurisdiction होती हैं. टेरिटोरियल जैसे दिल्ली का केस बॉम्बे में यूज कर. पेक्यूनरी jurisdiction अगर 2 करोड़ का क्लेम है तो सीधे हाई कोर्ट में जाएगा. 2 करोड़ से कम का क्लेम है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं. पेक्यूनरी jurisdiction जिसे बोलते हैं. और लीगल jurisdiction भी अलग-अलग होती है. जैसे रिट पिटीशन सिर्फ सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आएगी, वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं. सो हर कोर्ट की अलग-अलग jurisdiction होती है कि इस कोर्ट में कौन-कौन से लोग केस डाल सकते हैं, कौन-कौन सा कोर्ट ये जज कैन हियर व्हाट काइंड ऑफ केसेस एंड व्हाट इज द रिलीफ दैट दे कैन गिव. सो हर कोर्ट की आपको जब आप केस फाइल करो, ये बहुत जरूरी चेक करना होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दैट कोर्ट cases go on for 4-5 years and then the opposite party realize or someone realizes that this court doesn't have the jurisdiction, कि हमारे पास तो पावर ही नहीं है केस डिसाइड करने का. then it will go in other court and it will take lot of time. तो हम लोग एंड में पैराग्राफ लिखते हैं, 3 पैराग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, jurisdiction, that this court is competent and has a jurisdiction to decide this case. वो आप लीगली एक डिक्लेरेशन टाइप ही जाता है. वो आपका काम है देखना कि इस कोर्ट की jurisdiction है या नहीं एज अ लॉयर, बट यू certainly have to write this paragraph that as a declaration that this court has a jurisdiction to try this case. Limitation, कुछ cases का limitation होता है, like appeal है 60 days में फाइल करनी होगी, 90 days में फाइल करनी होगी. So you also have to write that this case is within the limitation period and is not delayed and is not barred by any delay. Limitation अगर extend हो जाता है तो उसकी अलग से application लगती है, but still you have to write that this case is within the limitation of this court. And you also have to write a third paragraph, which is called no other remedy has been sought on the same cause of action in any other court. So दो चीजें इसमें include होती हैं. Cause of action होता है जो dispute, जो मुद्दा है dispute का. That cause of action है जो हमारा, we have a cause of action to file this case legally. And second thing, हमने सेम कॉज ऑफ एक्शन पे ए और बी के आपस का बीच का डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो मैंने सिर्फ इसी कोर्ट में आई हूँ मैं ये डिस्प्यूट लेके, सिविल केस लेके. हाँ, दूसरे कोर्ट में चल सकते हैं, दूसरे केस क्रिमिनल चल सकता है, कोई और चल सकता है, बट इस रेमेडी के लिए मैं सिर्फ आप ही की कोर्ट में आई हूँ. मीनिंग मैंने 2-3 जगह सेम केस फाइल नहीं कर रखा. ये डिक्लेरेशन भी देनी होती है, which goes on behalf of the advocates. These are the things that advocate have to make sure कि क्लाइंट ने और केस तो नहीं फाइल कर रखे हैं, लिमिटेशन पीरियड के अंदर है, डिले तो नहीं है इस केस फाइल करने में, और कोर्ट की जुरिसडिक्शन है. डिक्लेरेशंस और भी अदर डिक्लेरेशंस जैसे होती हैं, जैसे आपको लिखना होता है कि वी हैव ऑल दी अवरमेंट्स, जो भी हमने सबमिशंस करे हैं ट्रू टू माय नॉलेज, जो एफिडेविट का पार्ट बन जाते हैं. तो आपको ये सारी डिक्लेरेशंस देनी होती है कि हमने जो हमने जैसे होता है कोर्ट में जाके बोलते हैं, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, गीता पे हाथ रख के कहते हैं. If you have not been to courts, you should. If you have not seen this, then you will see in future. एकदम ड्रामेटिक मूवी स्टाइल में से बोलता है वो कि हम जो भी कहेंगे हाथ सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. कुछ जगह अलग अलग होता है वो कोर्ट के हिसाब से. So same thing you have to give it in writing also. कि we have all the submissions that we have made are true to our knowledge, and we have not forged any documents. We have not hidden any facts that is important to the issue. So ये सारी declarations basic जो होती है कि आप कोर्ट में सबमिशन करने होते हैं. इन डिक्लेरेशन का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो आप हर ड्राफ्ट में कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि आपने 3-4 पैराग्राफ हैं वो हर सिविल सूट में जाएंगे. ये 3-4 पैराग्राफ हैं जो क्रिमिनल में जाएंगे. So you just go and copy paste it. Okay, before I go ahead with this, मैं I think 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं. क्वेश्चंस भी हम अभी हैं, तो क्वेश्चंस, anyone have any questions so far? Madam, my question is,
how we decide the compensation? Okay. So वैसे आपने बहुत ही वाइड क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन I'll try to answer in as short as possible. Compensation generally जितना लॉस होता है उस लॉस को कैलकुलेट किया जाता है, वो अमाउंट होता है. सो अब कॉम्पेंसेशन भी बहुत तरीके के होते हैं. मैं पहले मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन या मॉनेटरी लॉस की बात करती हूँ. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरे और आपके बीच में कि मैं आपको ये सामान दूंगी या फिर 10 पैकेट्स ऑफ पेन मैं दूंगी और बदले में यू विल हैव टू गिव मी 5,000 रुपीज. ये हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको सेल करूंगी ये चीज और आप मुझे 5,000 रुपीज इन रिटर्न यू विल गिव इट टू मी. मैंने आपको पेन दे दिए, आपने मुझे 2,500 रुपीज दिए और आप मुझे बाकी के 2,500 रुपीज नहीं दे रहे. ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये क्लियर कट लॉस 2,500 का तो मुझे है, क्योंकि मैंने आपको पेन दिए, हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ था और आपने वो अग्रीमेंट फॉलो नहीं किया, लॉस ऑफ 2,500 रुपीज. तो एक ये सिंपल सा कॉम्पेंसेशन ये बन गया 2,500 का. अब आपको 2,500 रुपीज वो आपको जब वो मिलते तो आप उससे और सामान खरीदते, आप 10 पेन फिर से खरीदते और आप वो 10 पेन किसी और को बेचते अगले 1 महीने में. ये है जो अभी तक मैंने बताया. यहाँ पे सिंपल लॉयर का काम खत्म हो जाएगा. मोस्ट लॉयर ये सिंपल काम है. 2,500 का लॉस हुआ. अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये दिमाग लगाने वाली बात होती है. ये कैलकुलेट करना होता है एंड यू हैव टू मेक द कॉम्पेंसेशन एज हाई एज यू कैन विद जस्टिफिएबल अमाउंट. सो मैं अपनी तरफ से सिचुएशन बता के जो ये कॉम्पेंसेशन जो मैं प्लीड कर सकती हूँ वो ये कर सकती हूँ कि मुझे वो 2,500 के और 10 पैकेट मिलने थे और वो मुझे अगले महीने बेचने थे, जिससे मुझे 5,000 का और प्रॉफिट होता. क्योंकि इसने मुझे 2,500 वो नहीं दिए हैं, मैं 5,000 का सामान नहीं बेच पाई, मैं सिर्फ 2,500 का सामान बेच पाई. मतलब अगले महीने भी मुझे 2,500 रुपए का लॉस हुआ है. तो मेरा कॉम्पेंसेशन है 2,500 नहीं, 5,000 बोल. ये फाइनेंशियल लॉस हो गया. सिंपल उसमें तरीके में मैं ये बोलूं कि जब आपका पैसा कहीं भी अटका होता है, इट्स ऑलवेज कंसिडर्ड, इट्स अ साइकोलॉजी और इट्स अ मैटर इन ऑफ प्रैक्टिस. आप उसको एफडी की तरह समझो कि आप वो पैसा कहीं और यूज हो सकता था. वो अभी नाउ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन कि अगर आई वाज एंटाइटल्ड टू 1 लाख रुपीज या फिर मुझे 1 लाख रुपए मिलने थे, वो मुझे मिलने में 1 साल का डिले हो गया और 1 साल बाद मुझे वो 1 लाख रुपए मिलेंगे, दैट विल नॉट हैव द सेम वैल्यू. तो उसका लॉस ऑब्वियसली बेसिकली बहुत ही बेसिक सिचुएशन में 1 लाख से ज्यादा का लॉस है मेरा. इसीलिए एक और जो कॉम्पेंसेशन इंक्लूड करते हैं उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड करते हैं, विच डिपेंड्स फ्रॉम 9 to 18%. बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में 18% मिल जाता है. कंज्यूमर केस में जनरली 12% मिलता है. अदरवाइज 6 से लेके कोर्ट वो डिसाइड करती है. बट आप हमेशा इंटरेस्ट भी मांगते हो. 1 लाख रुपए का मुझे लॉस हुआ है या फिर 2,500 रुपए का लॉस हुआ है, जब तक ये केस चलेगा, जब तक वो मुझे पैसे नहीं दे देता, तो आई एम ऑल्सो एंटाइटल्ड टू interest on this 1 lakh rupees. So that also forms a part of your compensation only, which is very very important. कि आप कोई भी compensation ले रहे हो, आप बाकी की चीजें calculate करो ना करो, but you should necessarily mention this interest वाली thing. 12% you are also entitled to interest. Now there is other type of compensation. Let's say loss of reputation. किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत बात बोल दी, मेरा डिफेमेशन हुआ है, न्यूज़पेपर में कुछ छप गया. जो सेलिब्रिटीज आपने देखा होगा बहुत वो करते हैं कॉम्पेंसेशन डिफेमेशन के केस फाइल, उन लोग लॉस ऑफ रेप्यूटेशन. अब आपको ये अपने क्लाइंट की या फिर जिसके बिहाफ पे कॉम्पेंसेशन मांग रहे हो, आपकी रेप्यूटेशन को उनकी बेसिकली इज्जत का एक मॉनेटरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा. जितने फेमस और जितने पावरफुल लोग हैं, जितने उनकी नोन या रिस्पेक्ट हो जाती है, उतना ज्यादा उनको कॉम्पेंसेशन होता है. तो अगर अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट कुछ उल्टी सीधी बात बोली है, डेफेमेशन हुआ है, तो अमिताभ बच्चन कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन ऑफ 10 करोड़ रुपीज. मेरे अगेंस्ट हुआ तो शायद मैं सिर्फ 1 करोड़ क्लेम कर पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है, मेरी इतनी वो नहीं. तो ये लॉस ऑफ रेप्यूटेशन वाला चीज हो गई. एक होती है इंजरी, बॉडीली इंजरी के कॉम्पेंसेशन. बॉडीली इंजरी का कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट होगा जितना आपका मेडिकल खर्चा आया उस हिसाब से. अगर आप वर्क लॉस हुआ है, आपको किसी ने चोट पहुंचाई है, आपको 10,000 रुपए इलाज में लगे,
आप 10 दिन तक ऑफिस नहीं जा पाए तो 10 दिन आपकी सैलरी कटी, वो भी कॉम्पेंसेशन का पार्ट हो जाएगा। उसके अगले 10 दिन आपका पैर टूटा हुआ था तो आपको कैब लेके जाना पड़ा ऑफिस, तो वो 10 जो आपने कैब का पैसा खर्च किया, दैट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। थर्डली, आपको अगर Ma'am, if anyone get permanent injury in the accident, permanent injury, like if someone lost his hand and then okay, with this I will share very interesting case जो बहुत famous case है, टॉट का। वो लॉस ऑफ मतलब टॉट का ही केस है। उसमें एक डॉक्टर, एक स्टूडेंट होता है 12th क्लास का, वेरी ब्राइट स्टूडेंट, एंड दैट पर्सन, उसको टॉन्सिल्स होते हैं, वो टॉन्सिल्स के इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता है, एंड उसके इलाज में डॉक्टर कमिट्स सम व्हाट यू कॉल नेग्लिजेंस, so that person loses their मतलब पैरालाइज हो जाता है, वो not able to work। उसका एडमिशन हो गया होता है बहुत अच्छे कॉलेज में, he can't join the college, he can't get the job। so अब इस सिचुएशन में उसका कॉम्पेंसेशन कैसे कैलकुलेट हुआ? उसका एक तो सारा खर्चा इलाज का वो, एंड ये कैलकुलेट किया गया कि ये what is the job that he could have got if he would have been in a perfect state, कि अगर मैं एक मतलब उसको ये इंजरी नहीं हुई होती तो वो 50 साल की अगर जॉब मिल जाती और वो 50 साल तक जॉब करता, उस हिसाब से कैलकुलेट किया 50,000 in 1 month to make the calculations easy। let's say 1 लाख वो एक साल में कमा पाता, तो उसको वो 12 साल तक करता है तो उसको 12 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन मिलेगा। इतना क्योंकि दोनों साइड से हमेशा बहुत सारी चीजें आती हैं फैक्टर्स में, बट मैं सिंपली बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ अभी। तो ऐसे कैलकुलेट कोर्ट ने किया कॉम्पेंसेशन, लॉयर ने ऐसे आर्ग्यू किया, एंड he was given actually बहुत सारा compensation, which is considered one of the biggest compensation in case of torts, because he got compensation of crores and crores of rupees, but still court was saying this is not enough, because एक किस पे कैलकुलेट करना इतना एग्जैक्ट द अमाउंट कितना लॉस हुआ है वो इतना भी इजी नहीं होता, which is why I also said a lot of lawyers hire people to calculate the compensation, क्योंकि वो सोच सकते हैं, उनका रोज का काम होता है कहाँ कहाँ कितना लॉस हुआ है। आप जितना डीपली सोच सकते हो कितना लॉस हुआ है, that is up to you, that is a lawyer's job, but some lawyers also do this। is it clear? Who are these people who hire? I mean, like, who are these people who, do the compensation thing? These are agencies. I've met just and a lot of them are in either you'll find them in law firms, उनके post का नाम ही होता है what do you call that, calculator something, and but this is practice that is not so common in India। so the people that I met, they were also from Netherlands or they were from Denmark। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट भी मतलब बहुत हायर केसेस में या फिर बहुत बड़े बड़े केसेस में यूज होगा, अदरवाइज इट्स not so common in India, but this is something that is doable। yes, and this is last question because I have to move forward and I also want to get some water। Ma'am, if the compensation amount which is calculated, it is very much high, and if the opposite party is not capable of paying that, then what? तो वो नहीं, जिसके पास जितना पैसा उतना ही दे पाएंगे, ये भी कोर्ट का लॉ है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज वो अटैच करवाई जा सकती है, व्हाटएवर जितने उनके एसेट्स हैं वो सारी अटैच करवाई जा सकती है, बट अगर उनकी कैपेसिटी 1 करोड़ की है और कॉम्पेंसेशन 50 करोड़ तो बनना है तो 1 करोड़ में ही मानना पड़ेगा ऑपोजिट पार्टी को, दैट इज ऑल्सो लॉ। मैम, लेकिन अगर समझो वैसा हो गया तो फिर अपोजिट पार्टी तो पूरा खत्म ही हो जाएगा ना, अगर उसका पूरा एसेट सामने वाले को दे दिया तो। So देखो, the one who commits wrong, there is no excuse for it। अगर कुछ गलत हुआ है, प्रूव हो गया है, so it doesn't matter आपकी सारी प्रॉपर्टी भी जा रही है, अगर आपने कुछ गलत किया तो कहीं तो that's the whole purpose of punishment, that you get punished for it, right? Yes ma'am। One more question। yes सपोज अमिताभ बच्चन का डिफॉर्मेशन हुआ तो 10 करोड़ का क्लेम कर सकते हैं, और आपने बताया आपके केस में आप 1 करोड़ कर सकते हैं। ये 10 करोड़ 1 करोड़, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट and how we are going to prove to the court? See, loss of reputation generally is an amount जो client और उनके डिस्कशन पे आपस में it's not, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है,
एक जनरल अमाउंट ही पुट किया जाता है कोर्ट को, और ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अगर आपको इसको सब्सटैंड करना हो, इफ दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग, इज आप जजमेंट्स पढ़ सकते हो, पुराने जजमेंट। जैसे सिमिलरली डेफेमेशन के जब आप केसेस और जजमेंट्स पढ़ोगे तो आप ये देखो कि आप अमिताभ बच्चन या फिर जैसे एक्टर का केस हुआ है, डेफेमेशन केस हुआ है, तो उसने कितने कॉम्पेंसेशन मांगे। एक तो ये तरीका होगा कि रेपुटेशन का एक जनरली वैसे ये देखा जाए इम्पॉसिबल चीज है, आप मेरी रेपुटेशन का, किसी की भी रेपुटेशन, आप फाइनेंशियल अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते, किसी की इज्जत की क्या मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, बट दिस इज समथिंग दैट इज जस्ट बिटवीन क्लाइंट एंड लॉयर, दे डिसाइड टुगेदर। वो अमाउंट कोट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अदर जजमेंट्स की पहले एक्टर का केस हुआ था तो उसमें 10 करोड़ दिए तो हम मांग सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इसमें भी जितने ज्यादा लोगों में पब्लिश हुआ है, लेट्स से कि अगर अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ गलत बात बोली है और वो सिर्फ पार्टी में बोली है और 10 लोगों को सुनाई दी है, तो कॉम्पेंसेशन 10 करोड़ में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर वही बात न्यूज़पेपर में छप गई तो ज्यादा होगा। सो ये सब बस कुछ फैक्टर्स हैं, और उस फैक्टर्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, बट बहुत ही सुपरफिशियल चीज ही है। सो आप जो अगर यू वांट कि कुछ फॉर्मूला है जिससे एकदम एग्जैक्ट अमाउंट निकला है, दैट इज नॉट द केस। दैट इज व्हाट द जॉब ऑफ लॉयर इज, कि वो आर्ग्यू करके कितना हायर अमाउंट कोर्ट के साथ से ला सकते हैं, कितना क्या प्रूव कर सकते हैं, कितनी बड़ी लॉस प्रूव कर सकते हैं, कि कितना बुरा हो गया उनके क्लाइंट के साथ। जितना बुरा आप प्रूव करोगे उतना ज्यादा पैसे मिलेंगे। दैट्स वेरी सिंपल। Okay, thank you, ma'am. Okay. Let's take break of 5 minutes, or you want to continue? Everyone continue. Okay. Then I'll take break of 2 minutes. Okay. I'll get some water and juice. Okay. Let's continue. अब ये जो चीज है, स्टेजेस एंड फॉर्मेट ऑफ अ केस, ये यहाँ से थोड़ा आप जब आप ड्राफ्ट करना शुरू करोगे तो ये आपको दिमाग में एक होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे लॉ में ना पैटर्न्स है। एज अ लॉयर आपको पैटर्न्स फिगर आउट करना है। जैसे आप पैटर्न्स फिगर आउट कर लोगे, बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। सो ये जो पैटर्न है जो हर जगह फॉलो किया जाता है, अभी तक हम लोग सिविल क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हमने टर्म्स देखे और अलग अलग तरीके से यूज किए, लेकिन एक ये सिंपल एक पैटर्न है जो मैं आपको बता रही हूँ, और वो हमेशा सेम रहेगा वेदर इट इज सिविल, क्रिमिनल और एनी अदर थिंग। सबसे पहले होता है एक केस फाइल, जिसको कुछ भी कह सकते हैं, सूट, प्लेन, पिटिशन, एप्लीकेशन। जो मैं बोल रही हूँ, मैं सबसे पहले जो गई हूँ एज अ प्लेंटिफ, जो मैंने केस फाइल किया, जो प्लेन फाइल करी है, पहले सबसे पहले केस फाइल होता है, कोर्ट में जाता है वो एक केस, जिसमें सारी फैक्ट्स लिखे होते हैं, क्या क्या हुआ, क्या गलत हुआ, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, किस लॉ की इशू है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा आता है, फिर वहां से क्या आएगा, सामने ऑपोजिट साइड से डिफेंस। मैं कुछ बोल रही हूँ कि सामने वाली पार्टी ने ये किया, ऑपोजिट पार्टी विल से कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, ये नहीं हुआ था, ये हुआ था। बेसिकली द डिफेंस, उधर से एक डिफेंस आएगा। जस्ट सी इट एज अ गेम, इट विल बी मच मोर फन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। केस फाइल हुआ, वहां से डिफेंस आया, उन्होंने कुछ बोला। अब आपके पास चांस है उसका भी डिफेंस करने का, उसका भी क्लियरेंस देने का, उसके भी एक्सप्लेनेशन देने का, जिसको बोलते हैं रिप्लाई ऑफ रिप्लाई, जिसको रिजॉइंडर रेप्लिकेशन कुछ भी बोल सकते हैं। दोनों सेम चीज है, बस नाम अलग है, विच इज वेरी कॉमन इन लॉ की सेम चीज होगी, बिल्कुल नाम अलग होंगे। तो और रेप्लिकेशन और रिजॉइंडर कंपलसरी नहीं होता, ये आपकी चॉइस होती है। तो जो फाइल करता है केस, उसके पास 2 चांस होते हैं अपना केस फाइट करने के, और जो डिफेंस में होता है उसके पास 1 चांस होता है अपना केस फाइट करने का, रिटन सबमिशंस के थ्रू। तो उसके बाद जब ये तीनों चीजें आ जाती हैं, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, प्लेंट होगा, उसका रिटन स्टेटमेंट आएगा, उसका रेप्लिकेशन होगा। ये सब जो हम चीजें डिटेल में ये बाकी कमिंग लेक्चर्स में समझ लेंगे।
अगर पिटिशन फाइल हुई है उधर से रिटन स्टेटमेंट आएगा, इसमें रिप्लाई जरूरी हो कि नहीं है या ना है। उसके बाद जब ये तीनों चीजें आ गई उसके बाद एविडेंस फाइल होता है केस में। एविडेंस अब दो तरीके से भी होता है सिविल केस में। सिर्फ जैसे आपने जो मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक तो होता है कि लोगों को बुलाया जाता है, कटघरे में पूछा जाता है, एक तो वो तरीका जो क्रिमिनल में चलता है। सिविल में भी काफी बार चलता है। कुछ जो छोटे अमाउंट के केस होते हैं जैसे कंज्यूमर केस हो गए, उसमें किसी को कटघरे में आने की जरूरत नहीं होती, और बहुत बार विटनेस को कटघरे में आने की जरूरत नहीं भी होती है अगर कोर्ट अलाउ कर दे कि वो अपना रिटन में दे दे एविडेंस की आई वाज प्रेजेंट हियर, एंड एफिडेविट भी दे देते हैं आई वाज प्रेजेंट हियर एंड दिस हैपेंड, आई एम गिविंग दिस माय एज एविडेंस। तो इन तीनों चीजों के बाद एविडेंस फाइल होता है कि जो आपने बोला है, मैंने बोला कि मैं रात में 10 बजे यहाँ थी, तब चोर आया और मेरे हाथ से फोन खरीद के चुरा के ले गए, मुझे एविडेंस में बताना पड़ेगा कि मेरा ये फोन था, मेरे फोन का नंबर ये था, मैं 10 बजे यहाँ पे ये थी, मैं ऑफिस से वापस आ रही थी, या फिर मैं पार्टी से वापस आ रही थी, या पार्टी में जा रही थी, कुछ भी ये तो मुझे जो भी मैंने बोला है उसको प्रूव करना पड़ेगा। सेम चीज ऑपोजिट साइड को भी करनी पड़ेगी, जो उन्होंने बोला है कि मैं तो 10 बजे यहाँ था ही नहीं, उसके फोन लोकेशन देखी जा सकती है, या फिर ये सब चेक किया जा सकता है, कुछ भी, तो वो सब एविडेंस में आते हैं। ये सब चीजें सेम सिविल में भी रहेंगी। सिविल में कुछ और पूछा जाएगा, सिविल में फोन की लोकेशन ये सब चेक ना किया जाए, कुछ और चेक किया जा सकता है, जैसे सेल डीड चेक की जा सकती है, या फिर लीज डीड चेक की जा सकती है कि क्या अग्रीमेंट है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, एटसेट्रा। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ओरल और रिटन। मोस्टली कोर्ट्स प्रेफर करते हैं कि जो आप ओरल आर्ग्यूमेंट्स करें उनको राइटिंग में भी दे दो, क्योंकि बहुत बार जज कुछ सुनते नहीं है। So it's always good to give your written arguments, your oral arguments in writing, because it's good in two ways, because whatever you're saying will be on record, and judges also keep on changing. So if it goes from one judge to another, you have the same written arguments before all people. And also, if judge is not listening, you give it to them in writing. They'll read it and they'll have it in mind when they are giving the judgment. आर्ग्यूमेंट्स के बाद जजमेंट आता है, जजमेंट के बाद भी केस खत्म नहीं होता, उसके बाद भी स्टेज आती है एग्जीक्यूशन की, जिसके लिए एग्जीक्यूशन पिटीशन पड़ती है। तो और जजमेंट के बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपील में भी जा सकते हो और एग्जीक्यूशन में भी जा सकते हो। तो अपील में जाने का मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और कोई भी दोनों साइड जा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आई एम सेटिस्फाइड विद द जजमेंट, सो मैं एग्जीक्यूट करवाने चली गई, मैंने एग्जीक्यूशन पिटीशन डाल दी, बट द अदर पार्टी वेंट इन अपील। जब वो अपील में जाएंगे तो एग्जीक्यूशन भी रुक जाएगा। तो ऐसे केस में चलता है। जजमेंट पे एक स्टेज पे केस खत्म हो जाता है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो केस पूरा ही खत्म हो गया, वो सिर्फ उस कोर्ट के लिए खत्म होता है। उसके बाद भी एग्जीक्यूशन के लिए आपको दूसरी कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर वहां से काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन का भी फाइनल ऑर्डर आता है, तब जाके जो भी आपने क्लेम किया है आपको मिलता है। अगर एग्जीक्यूशन पे ऑब्जेक्शन लगा दिए किसी ने तो आपका केस रुक जाएगा, और अपील लगाइए तो भी आपका केस रुक जाएगा। Fundamental rules of pleading is every pleading must primarily focus on facts and not law. ऐसा नहीं है आपको लॉ नहीं लिखना है, बट आपका मेन फोकस होना चाहिए फैक्ट्स क्लियर करने में। आपको कोर्ट को भी एज अ लॉयर फैक्ट्स समझाने होते हैं, क्योंकि ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड, जनरली स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है दैट द मोस्ट ऑफ द अमाउंट इज स्पेंड इन कोर्ट्स इन telling the judge what actually happened, what is the actual story। और ऐसा नहीं कि ऐसा हो रहा है कि हमेशा एक झूठ बोल रहे होते हैं, या फिर कोर्ट में बिल्कुल वैसे चल रहा होता है। कभी कभी सच में इतनी कंफ्यूजिंग स्टोरी हो जाती है दैट both the parties acting very honestly, it's and stating nothing false on record, still it's very complicated to understand the story। So as a lawyer it's your job कि आप स्टोरी को अच्छे से समझ के फैक्ट्स लिखो, and your pleading should primarily focus on the fact, law is secondary। and law को use कैसे करना है, state कैसे करना है, that will also come up। It is the duty of the judge to ascertain facts and decide which law applies। तो ये actually जज का काम है कि वो आपके facts पढ़े, क्योंकि जो आप plead कर रहे हो आप भी बोलोगे कि नहीं, जैसे भी compensation की बात हुई, आप तो बोलोगे कि मेरे 10 लाख नहीं, मेरे तो 20 लाख का नुकसान हुआ है। तो वो जज की जॉब है डिसाइड करना कि आपको कितने का नुकसान हुआ है और किस लॉ के अंदर नुकसान हुआ है। आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप तो बोलोगे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, पार्टीज ऐसे ही बोलते हैं, बट इट्स द ड्यूटी ऑफ अ जज टू डिसाइड व्हिच लॉ अप्लाइज, वेदर इट्स आईपीसी, वेदर इट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, and it is presumed that the court knows the law, which is very very important in your submission and in your argument, that you never
ever act in the court that judges don't know anything. And it's a very typical situation to understand, because you also have to make them understand like they don't know anything. आपको उनको बताना ऐसे है कि उन्हें कुछ नहीं आता, but आपको उनको ये जताना नहीं है कि उनको पता है. फैक्ट समझाते हुए आपको ऐसे करना है कि उनको कुछ भी नहीं पता. लॉ समझाते हुए आपको ऐसे एक्ट करना है जैसे उनको सब कुछ पता है. आप यू आर स्टेटिंग द ऑब्वियस. दिस इज लाइक वेरी स्मॉल ट्रिक्स ऑफ प्लीडिंग. सो जब व्हेन यू आर राइटिंग फैक्ट्स, आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को अपने क्लाइंट की, यू शुड डू. State material facts and reference to evidence. You should always stick to the material facts. If it is a case of breach of contract that happened in 2015, you're not going to write what happened in 2010 if it is not relevant. If there is a case of rape, you are not going to write what was she wearing because it's not relevant. So आपको सारी चीजों में मटेरियल फैक्ट लिखने हैं, एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी. एक्स्ट्रा चीजें तब लिखते हैं लॉयर जब वो केस घुमाने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर they are trying to take the attention from the important point. So if you have a good case in your hand, you stick to the material facts, you stick to the facts that are important. And to decide what are material facts, सबसे important चीज आपको अपने हिसाब से कोई मटेरियल फैक्ट लगेगा वो नहीं होगा. अभी कैसे डिसाइड करते हो वो आप लॉ पढ़ के डिसाइड करते हो, वो आप जजमेंट्स पढ़ के डिसाइड करते हो कि आपको क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या क्या रेलेवेंट है आपका कॉम्पेंसेशन डिसाइड करने में, क्या क्या रेलेवेंट है चोर पकड़ने में. तो इम्पोर्टेंट नहीं है दैट यू स्किप टू दैट पार्ट, बिकॉज इट्स important that you do not write stories, you write as accurate as possible. और जो आप लिख रहे हो आप उसके साथ साथ जितना प्रूफ हो सकता है उतना लगा के चलो साथ में. If you're writing, I was here at 10 p.m. and I was outside movie theater watching a movie. I had 10 show of 10 and this is the ticket. So वो एक आपने फैक्ट लिखा कि मैं 10 बजे यहाँ थी. Why it is important? Because फोन आपका वहीं से चोरी हुआ तो आपको बताना जरूरी है कि क्या आप वहां पे थी, आप वहां क्या कर रही थी. और टू प्रूव दैट यू वर राइट देयर आपने टिकट लगा दिया. यस अभिषेक मिश्रा. मैम ये एविडेंसेस उसी टाइम पर अटैच करने जरूरी होते हैं या बाद में कर सकते हैं, जैसे एनेक्चर मेंशन करके एक सारे एविडेंसेस एक साथ लास्ट में? नहीं जरूरी नहीं होता. फॉर्मेट क्या होता है? जरूर किसी आपने ये क्वेश्चन पूछा, इसका भी कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है. यू हैव टू यूज एवरीथिंग ऑन केस टू केस डिपेंडिंग. जब कुछ एविडेंस होते हैं जो आपको टाइम पे लगा देने चाहिए ताकि आपके बेसिक मटेरियल फैक्ट्स डिस्प्यूट ना हो कि मैं वहां थी, ये मेरा टिकट है, ये चीज डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए. कुछ एविडेंस आप अगर शुरू में लगा दोगे तो वो उसका काउंटर ले आएंगे. तो आपको ये केस टू केस जिस पे डिसाइड करना होता है. और 2 स्टेजेस होती हैं एविडेंस की. एक तो आप साथ साथ में लगो एनेक्चर जैसे आप कह रहे हो वो भी चलता है. एक स्टेज होती है, दिस आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लोअर कोर्ट ट्रायल के टाइम पे. हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आपको सब कुछ एक साथ लगाना होगा तो वहां तो एक क्वेश्चन ही नहीं आएगा क्योंकि आपको एक ही टाइम चांस मिलता है. जब आप केस ट्रायल के टाइम पे बात कर रहे हो तो वो आपकी एक चॉइस होगी, आपका डिस्क्रिशन होगा एंड ऑल्सो इज गोइंग टू बी योर लॉयर्स माइंड व्हेन यू वांट टू पुट इट बिफोर द कोर्ट. क्योंकि अगर आप कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज होगी जिसका कोई काउंटर नहीं है, दैट्स एक्सेप्टेबल. बट अगर आप कोई वीक चीज रख रहे हो ना जिसका काउंटर सामने से आ सकता है, देन इट्स गुड टू होल्ड दैट बैक एंड नॉट गिव एनी टाइम टू द ऑपोजिट पार्टी टू फाइंड आउट द काउंटर ऑफ इट. सो वो केस टू केस डिपेंड करेगा. और 2 स्टेजेस होती है, एक आप शुरू में केस के टाइम कर दो एज एन एक्शन जैसे आपने कहा, दूसरा जब आपका एविडेंस हो रहा होगा तब ले आओ. ओके थैंक यू मैम. वैसे आप लोग के क्वेश्चन ज्यादा ड्राफ्टिंग से ज्यादा केस से रिलेटेड है, बट आई एम glad that at least people are present and asking questions. Okay. State facts and submissions boldly and plainly. Very important skill of a lawyer. आपको अगर डाउट भी है इस चीज का, किसी चीज का डाउट है, आप उसको भी कॉन्फिडेंटली लिखोगे. आप क्या नहीं लिखोगे I maybe was present there, it might be 10:20, आपको नहीं पता टाइम, पर आपको जो भी लिखना है बहुत कॉन्फिडेंटली लिखना है. You have to allege everything that you are doing in your plaint very confidently. Let the other party defend and prove it otherwise. आपको जो लिखना है आप उसको आप जो भी अपनी राइटिंग या सबमिशंस कर रहे हो आप उसमें अंडर कॉन्फिडेंट नहीं लिखने चाहिए. So whatever you are writing, you have to write it as very boldly and plainly, without doubts and discrepancies, that this happened on that very day. And
I am entitled, my loss of reputation is of 20 crore rupees, not it might be of 20 crore rupees. No. You say it is of 20 crore rupees, nahi bhi hai, to other party will defend. But whatever you're stating, you have to state it very boldly. You have to allege it very boldly. Let the other party defend themselves. Every pleading must be signed and verified by parties. Very important thing. इसमें भी defects लगते हैं. एक तो होता है एफिडेविट लगता है हर उसके साथ, हर प्लीडिंग्स के साथ. एविडेंस भी होता है, वो अब एफिडेविट फॉर्मेट में होता है, और लॉयर्स को भी साइन करना पड़ता है. और ये सारी इतनी बेसिक चीजें हैं दैट लॉयर्स आल्सो हैव टू साइन एंड पार्टीज आल्सो हैव टू साइन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, a lot of people will tell you कि आप क्लाइंट के फर्जी साइन कर दो या फिर इसके साइन कर दो. It will not matter. Please do not ever fake signs of your client. You can do it for your, between you and me. I know it's also not right, but ज्यादा से ज्यादा अगर आपको किसी के साइन फर्जी मारना है तो वो अपने फ्रेंड्स, एडवोकेट जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हो उसको मानो. नेवर एवर forge the claims of sign of your clients. Don't ever do that. क्योंकि वो सामने वाली पार्टी से भी इशू कर सकते हैं, वो भी इसका क्लेम ले सकते हैं, आप पूरा केस भी हार सकते हो इससे कि ये तो साइन नकली है. दूसरा, क्लाइंट भी कल कह सकते हैं कि हमने तो ये किया ही नहीं, तो वो आप पे लॉस आएगा. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. लॉट ऑफ पीपल विल आस्क यू कि अरे कर दो साइन. लॉट ऑफ क्लाइंट्स विल आस्क यू कि अच्छा हमें इतनी दूर से आना पड़ेगा साइन करने के लिए, वकील साहब आप ही कर दीजिए या वकील मैडम आप ही कर दीजिए. एवर डोंट एवर एक्सेप्ट टू इट. ऑलवेज से नो टू इट. Concise form and precision, certainty. Always remember, judges do not have the time and they are not interested in reading your full stories. So try to make it as short as possible. इसीलिए एक जो ड्राफ्ट होता है उसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया जाता है. जब मैं आपको ड्राफ्ट नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ड्राफ्ट पढ़ेंगे, ये सब एनालाइज करेंगे, देन विल डिसाइडेड. बट आपको अगर समझना है, आपको अगर सीखना है कि कैसे प्रिसीजन और सर्टेनिटी के साथ कैसे इजीली सब चीजें एक्सप्लेन करता है, देन आई विल रियली सजेस्ट यू रीड जजमेंट्स ऑफ Chandrachud, and because he divides his whole judgment and paragraph in sub-para, heading deke, sub-heading deke. So you can also do that in your writing. And always remember, एक फॉर्मेट तो हर चीज का होता है, लेकिन कोई आपको अपनी कहानी बताने का कोई फॉर्मेट नहीं है. तो आप उसको हेडिंग दे सकते हो जैसे आपको इजी लगे, जैसे आपके लिए कंफर्टेबल हो कोर्ट को समझाना. प्लीज फॉलो दैट पैटर्न, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड लॉयर टू लॉयर. So you should write very concise thing, with very precision and certainty. And the job of pleadings is कि आप कोर्ट के सामने सच लेकर आओ as easily as possible. And कोर्ट का काम जितना आप कम कर सकते हो अपनी pleadings के थ्रू, अपने submissions के थ्रू, the better the lawyer you are. Pleading should be easy to read. The terms that we are using are so common that judges, जो heavy words की अभी हम बात कर रहे थे, one of the person also asked this question. These are considered very common languages, but आप उसको complicate नहीं करना चाहिए ज़्यादा अपनी story को. Complex sentences should be avoided, and pleading should speak of a story. आपकी जो हर केस में एक story, जो भी आपके पास client आ रहे हैं, whoever they are coming, they have a story. It may be boring or it may be interesting. कुछ तो कोई तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ है, कहीं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कहीं तो डिवोर्स में आपस में लड़ाई झगड़े हुए कि डिवोर्स पे बात आई है. तो स्टोरी हर जगह है. इट्स योर जॉब to write that story and make it interesting for the court, because everyone loves interesting stories, even judges, even courts. Fact, claims, relief and allegation should be clean and precise. आप जो क्लेम कर रहे हो बिल्कुल अकॉर्डिंग इन लॉ होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जिस लॉ में आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो उसमें 7 साल की सजा है और आप बोल रहे हो कि इसको 10 साल की सजा दे दो, या फिर जहाँ पे आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो उसमें तो कोर्ट 10 करोड़ का कॉम्पेंसेशन दे सकती है, आप 12 करोड़ का मांग रहे हो. तो आपके रिलीज और क्लेम्स भी सब क्लीन होने चाहिए, विद अकॉर्डिंग विद लॉ होने चाहिए, एंड वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज एंड जस्टिफाइड. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड like I was talking about this story, there are 2 stories that goes in a case. First is story of facts, जो मैंने कहा कि क्या हुआ, what happened, when it happened, what is the offense, what is the cause of action, मतलब what is the root cause of this dispute, and what are the documents. And always remember, client will tell you a story when they'll come to you, and they will say a lot of things. You do not write everything in the plain. You write all those things that you are sure of, जिसके पास आपका एविडेंस है. आप क्लाइंट को भी मना कर सकते हो कि नहीं जो आप बोल रहे हो, आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट फॉल्स, बट आपके पास जिसका एविडेंसरी प्रूफ है आप वही लिखो. दिस इज एन एक्सेप्शन इन सम केसेस, लाइक फैमिली में ये नहीं चलेगा
क्योंकि फैमिली में सिर्फ दो लोगों की आपस की बातें होती है, फॉर दैट मैटर सेक्सुअल ऑफेंसेस में भी दो लोगों की आपस की बातें होती हैं, तो वो वहां पे तो कोई एविडेंस मिलना मुश्किल है. डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में या फिर डिवोर्स केस में हमेशा ऐसे होता है. बट अदर देन दैट, whatever you, especially in civil cases and criminal also, whatever you are writing, जितना एविडेंस आपके पास है, जितना आप श्योरिटी के साथ लिख सकते हो, you write only that point. You take wording from documents only. You take your pleadings, you make your pleadings from the documents only. कि सबसे पहले आप क्लाइंट से मिलोगे, आप उसकी स्टोरी समझोगे, आप उनसे कहोगे डॉक्यूमेंट्स दो, फिर आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे, फिर जो क्लाइंट ने स्टोरी बताई है और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, आप उनको मैच करोगे, ये बात मैच हो रही है, जो बातें मैच होंगी आप सिर्फ वही लिखोगे. That is very important for a lawyer to understand, and this is very simple exercise that you have to do. I'll repeat it again. You talk to a client, they'll tell you a story which will be half, कुछ सच होंगी, कुछ झूठ बातें होंगी. आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आप स्टोरी मैच करोगे उन दोनों से, और जो चीजें क्लाइंट ने भी बोली है, जो चीजें डॉक्यूमेंट में भी, एविडेंस में भी हैं, आप वो लिखेंगे. That is will save you two things. That will save you from embarrassment also, because a lot of times clients lie and advocates don't know, and that is a very bad situation because only lawyers are supposed to lie, but clients will also do it. तो आपको कोर्ट में जाके disrespectful feel करना पड़ेगा, आपको embarrassed feel करना पड़ेगा. That should not happen. So also जो चीजें प्रूव नहीं होता है, वो बहुत बड़ी चीजें कोर्ट में टाइम, they take time because the other party takes a lot of time in disputing it, and at the end जो strong नहीं है, जो weak है आपकी बात के लिए केस, उसमें अगर टाइम वेस्ट किया है ऑपोजिट पार्टी ने उसको उस पर लड़ने पे, तो वो आपका लॉस भी है, आपका लॉस ही है. सो एक तो ये फैक्ट हो गया कि आपको फैक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, स्टोरी क्या है एविडेंस के हिसाब से. और दूसरी स्टोरी जो ऑल्टरनेटिवली चल रही होती है, वो होती है स्टोरी ऑफ लॉ. हर केस में एक लॉ एप्लीकेबल होगा, तो आपके लिए सबसे पहले, एंड यू मेक पॉइंट्स ऑफ दिस थिंग स्पेशली, कि आपको ये देखना ही देखना है कौन सा लॉ एप्लीकेबल है उस सिचुएशन पे. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगता है, उसमें स्पेशल रिलीफ एक्ट भी लग सकता है, उसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी लग सकता है, उसमें कंज्यूमर केस भी लग सकता है. आपका काम है देखना व्हाट आर ऑल ऑफ द लॉज दैट आर एप्लीकेबल, क्योंकि एक सेम ऑफेंस पे अलग अलग जगह केसेस हो सकते हैं. जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है तो आप पुलिस के पास भी जा सकते हो, और सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे उसका केस है तो आप सीधे अपने एम्प्लॉयर के पास भी जा सकते हो. कंज्यूमर आपके साथ, आप कंज्यूमर हो, आपके साथ कुछ कंज्यूमर फ्रॉड हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट फ्रॉड का केस अंडर आईपीसी भी डाल सकते हो, और आप कंज्यूमर केस कोर्ट में भी जा सकते हो रेमेडी लेने के लिए. सॉरी. तो आपका सबसे पहला काम होगा ये देखना कि स्टोरी में कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं. फिर आप अपने क्लाइंट को बताइए सर, कंज्यूमर केस भी हो सकता है, क्रिमिनल केस भी हो सकता है, सिविल केस भी हो सकता है. फिर आप उनके लिए सारे बेस्ट सॉल्यूशन निकालें, वो लॉज पढ़ने के बाद होगा. और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, रेमेडीज डिसाइड करने के लिए, जो कॉम्पेंसेशन का आंसर भी जो आप पूछ रहे थे कि कॉम्पेंसेशन कैसे भी डिसाइड करते हैं, वो जजमेंट पढ़ने से ही आता है. एक, क्योंकि जजमेंट पढ़ने से आपको समझ आएगा कि ऐसा अच्छा पहले ऐसा हो रखा है, तो कोर्ट में प्रूव करना इजी भी हो जाएगा कि सिमिलर सिचुएशन में क्या क्या हो रखा है पहले कोर्ट्स में. और कुछ आपके एक्सपीरियंस से भी आएगा. कुछ लॉ में डायरेक्टली लिखा होता है, तो वो आपको लिखना नहीं है कि चोरी जिसने करी है उसको सजा मिलेगी, that person will go to jail, so it's written. But you read judgment to figure out what are the possible remedies available, which is why yes, Preeti Jain. Ma'am, if compensation mentioned in the draft is not appropriate, so will the judge consider this point for the non-acceptance of the draft? Non-acceptance of the draft. Can you repeat it? Compensation is not compensation. Yeah. If the compensation mentioned in the draft is not like appropriate, so will judge consider this point for the non-acceptance of the draft? Like, will he consider the draft as? No, there are two situations possible. अगर आपके ड्राफ्ट में कोई बेसिक सी डिस्क्रिपेंसी जो ठीक की जा सकती है, तो आप हमेशा कोर्ट को ये बोलोगे दैट procedural mistake or the mistake of procedure should not cause harm to anyone.
सो आपने सिर्फ कॉम्पेंसेशन ढंग से जस्टिफाई नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी कंप्लेन उठ जाएगी, बट ये है कि आपको कॉम्पेंसेशन उतना नहीं मिलेगा। आपने अगर सही करी, मतलब वो वाली प्रेयर एक्सक्लूड हो सकती है आपकी, आपको वो रिलीफ नहीं मिलेगा। दैट इज वन थिंग। बट ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा केस ही उड़ जाए। दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, कि आपने कॉम्पेंसेशन मांग रखा है 12 करोड़ का, जिस कोर्ट में आप जा रहे हो उस जज के पास पावर है सिर्फ 10 करोड़ का कॉम्पेंसेशन अलाउ करने की, तो वो तो आपका केस वहां से बिल्कुल मतलब that court can refuse to take your case because it's first of all not within the jurisdiction and it is not justified. Also, if you could go back to slide of this topic. Let me finish it, then I'll because I was in the middle. Okay. So what you have to understand while understanding in story of law कि कैसे कैसे प्रोसीजर कहाँ कैसे होता है। ये सिविल केस है तो पहले सिविल कोर्ट में जाएगा, कौन सी सिविल कोर्ट में जाएगा और कैसे फाइल होगा केस, कौन कौन सी एप्लीकेशन उसके साइड फाइल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सीपीसी पढ़ोगे और बहुत अच्छे से जितने भी पॉइंट्स हैं पॉसिबल, जो भी आपके प्रोसीजर आप मिस नहीं करने चाहिए। सो प्रोसीजरल लॉज अलग होते हैं और सब्सटैंशियल लॉज अलग होंगे, तो आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे। एंड यू द स्टोरी ऑफ लॉ दैट व्हाट इज द प्रोसीजर टू गेट द रिलीफ शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड। that is when you will be able to fight your case well in the court. So आपको फैक्ट्स तो क्लियर होने ही होने चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ है, बट आपको लॉ इन द सेंस प्रोसीजर, क्रिमिनल केस है तो वो कौन से कोर्ट में होना चाहिए, क्या वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटिव कोर्ट में होना चाहिए, सेशन कोर्ट में होना चाहिए, और सेशन कोर्ट में है तो कौन कौन सी चीजें उसके साथ लगेंगी, क्या इस केस के साथ एफिडेविट लगेगा या नहीं लगेगा, क्या इसके साथ एविडेंस लगेगा या नहीं लगेगा, क्या इसके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, क्या इसमें 145(2) सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी। ये आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मोर देन द फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स आपको एक बार 2-3 बार पढ़ के समझ में आ जाते हैं और वो विद इन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ टाइम केस भी आ जाते हैं। लॉ आपको शुरू से ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर कुछ एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन मिस कर दी तो उसका लॉस हो। सो तो भी चीजें आप अगर सीआरपीसी क्रिमिनल केस है तो वो सीआरपीसी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए क्या होगा, अगर वो सिविल केस है तो सीपीसी के हिसाब से होना चाहिए क्या लगना चाहिए, एटसेट्रा। ओके, नाउ आज मैं सिर्फ इतना ये बताने है कि आप अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट कैसे करें, जो कि मैंने उसका भी पहला पॉइंट आपको ये बताया है कि 2 स्टोरीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, विच इज द स्टोरी ऑफ योर क्लाइंट एंड द स्टोरी ऑफ लॉ, दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज आप ड्राफ्ट स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स लिखना अपने लैपटॉप में, अपने रफ नोटबुक में, जहां पर भी जैसे जैसे क्लाइंट बता रहा है आप उनसे पूछो अच्छा किस डेट को क्या हुआ, एंड देन यू प्रिपेयर इस डेट को ये हुआ, अ टेबल, यू मेक अ टेबल एंड देन यू राइट इस डेट को ये हुआ। लेट्स से it's a divorce petition, it's a case of a divorce, तो आप उनसे पूछोगे किस दिन शादी हुई, कब से कब तक आप साथ रहे, कब से लड़ाई होना शुरू हुई, पहला इंसिडेंट ऑफ क्रूअल्टी क्या हुआ, किस किस डेट को क्या क्या हुआ, ये हर केस में आपके सामने एक लिस्ट ऑफ डेट्स होनी चाहिए। दैट इज वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप अपने क्लाइंट से सारे डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ लीजिए जितने भी वो दे सकते हैं, फिर आप उन्हें पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट है आप उनको रखिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है आप उनको वापस भी कर सकते हैं। बेयर एक्ट्स हमेशा खोल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेयर एक्ट्स एक बार नहीं 3 बार पढ़ना जरूरी है। अगर आपकी डिवोर्स पिटिशन है और अगर आप या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट का है तो आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स खोल के रखिए जो आपके सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं, क्योंकि जनरली एक केस में 2-3 सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। आप उनको यू रीड देम 10 times because you do one case and it should be very clear to you, because next time when it comes it should be easy for you. That is why people go after experienced lawyers. So keeps the Bear Act open with you all the time, read them again and again, and then what you do is you make a rough draft. Rough draft आप कैसे करोगे, आप उसमें स्टोरी लिखोगे, आप उसमें लॉ के हिसाब से अपनी अमेंडमेंट्स डालोगे जो जो लॉ में रिक्वायरमेंट्स हैं, और अब फिर क्या करोगे, आप एक फॉर्मेट लोगे। जैसे मैंने बताया कि फॉर्मेट होता है हर चीज का। अगर आप डिवोर्स पिटिशन ले रहे हो फिर आप किसी से फॉर्मेट आपने अरेंज किया या आपको एक फॉर्मेट ऑनलाइन मिल जाते हैं, आपने डिवोर्स वो लिया, फिर आप उस फॉर्मेट में अपना जो रफ ड्राफ्ट है कॉपी पेस्ट करो। इससे सबसे कम चांसेस हैं मिस करने के बेसिक चीजें, कि आप जुरिसडिक्शन क्लॉज ना भूलो, आप ये ना बोलो कि ऊपर क्या जाएगा, आप अपीलेंट और इन सब मिस्टेक ना करो, ये हमेशा चेक करके रखना।
ये सारी छोटी छोटी चीजें. And the other way to go about it is steps. First, you write like a mad person. Like I said, आप एक rough story लिखिए पहले. जब आपको एक दोनों स्टोरी जब क्लियर हो गई है, आप सब कुछ एक्साइटेड हो, आप अपना लिखना शुरू करिए एज अ राइटर. You start writing as a writer and you start writing like you're writing a story. And you have to include both stories of law and stories of your life. Stories of fact, stories of law. Stories of procedure and stories of cause of action. आपको दोनों क्लियर होनी चाहिए, फिर आप उसे लिखना स्टार्ट करो. आपके सामने बेयर एक्ट होने चाहिए, आप उसमें से लैंग्वेज चूज करो और आप उसको एक रफ ड्राफ्ट दो. उस रफ ड्राफ्ट में आप कैसे लिखोगे? आपने फैक्ट्स लिखे, आपने बताया कि ये गलत हुआ, ऐसे ऐसे गलत हुआ, एंड दैट्स व्हाई दिस लॉ इज एप्लीकेबल. आपने एक केस आपने अपनी तरफ से अपने जैसा अपने दिमाग में बनाया हुआ है केस कि मैं कैसे आर्ग्यू करूंगी इसको, आपने वैसे अपने दिमाग में क्लियर कर लिया, आपने वो लिख दिया. फिर आप आओगे उस कारपेंटर स्टेज पे, आप उसको एक फॉर्मेट में ले जाओगे, आप उस हर चीज को पैराग्राफ वाइज करोगे, आप उसको हर जगह पे फिट करोगे, इंडेक्स बनाओगे, फिर आप उसको लिस्ट ऑफ डेट्स और लिस्ट ऑफ जरूरी है वो भी लिखोगे. सिनॉप्सिस चाहिए होता है कभी काफी ड्राफ्ट में, आप उसको सिनॉप्सिस ऐड करोगे. फिर आप उसका लिखोगे ये फैक्ट्स ऑफ द केस है, बैकग्राउंड ऑफ द केस ये है, कॉज ऑफ एक्शन कब अरोज हुआ, ये हुआ. फिर आपने उसको पूरा फॉर्मेट दिया. फिर आपने प्रेयर पे आए हो, आपने प्रेयर लिखी है, क्या क्या रिलीफ आप मांग रहे हो, एंड देन एफिडेविट जितने साथ में लगे हैं वो अटैच करोगे, एक फाइनल ड्राफ्ट बनाओगे, एंड देन यू विल गिव इट एन आर्किटेक्ट स्टाइल. मीनिंग आप उसको छोटी छोटी सारी चीजें परफेक्शन जितनी इम्परफेक्शन से आप ठीक करोगे, यू विल मेक इट एज अ परफेक्ट ड्राफ्ट. जस्टिफाई करोगे, फॉन्ट वो यूज करोगे जो मैंने बताया, टाइम्स न्यू रोमन 14, 1.5 स्पेसिंग, कहीं भी पे भी मार्जिन मिसमैच नहीं होनी चाहिए, पेज नंबरिंग हर जगह होनी चाहिए, पेज नंबरिंग करेक्ट होने चाहिए, एनेक्सर जो भी आप साथ में डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो क्लीन होने चाहिए, आपके पैराग्राफ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, टाइपोग्राफिकल एरर नहीं होने चाहिए. ये आप उसकी प्रूफ रीडिंग और उसको एकदम क्लीन करोगे. एंड देन इट्स ऑलवेज गुड कि यू शुड हैव समवन टू फॉर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. आप किसी और को दिखाइए, आप ड्राफ्ट दिखाइए, क्योंकि जब हम एक स्टोरी you know what will happen is what happens generally is आपके को क्लाइंट ने स्टोरी बताई है, हम as lawyers what we try to do is we try to at first stage we try to buy that story even if it is true or false. हम वही क्लाइंट की स्टोरी अपने दिमाग में चलाते हैं क्योंकि हमें वही स्टोरी कोर्ट में बोलनी है. तो हम कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं इन दैट यू नो कि ये तो हो जाएगा, इन दैट मूवमेंट ऑफ वी आर गोइंग टू विन दिस थिंग, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमें नहीं समझ में आती. सो और कभी कभी एक्सपीरियंस की वजह से भी मिस हो जाती है. सो इट्स गुड कि आप एक्सपीरियंस किसी के पास जाएं और आप उनसे वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लें और उनको एक बार ड्राफ्ट दिखाएं. वो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी निकाल सकते हैं और कभी कभी लीगल सोल्यूशन भी आपको दे सकते हैं. सो always have a friend where you can go and get a third person perspective. आप उनसे डिस्कस भी कर सको जहाँ पे आपको डाउट्स भी हो कि मैंने ये लिख तो दिया बट आई एम डाउटफुल अबाउट दिस, सो if you can give me your feedback. So that's most important thing. Okay, one last exercise, but if you have any other questions, someone was asking me to go back, so yeah, Chandrika. Ma'am, can you please share this PPT with us? Yeah, I'll share it with you in the group.